the world. To be honest, now these days, I expect market to do anything at any given time. I'm like, all right, okay, ये भी देख ली. कल भी एरियाज प्रॉपर रिस्पेक्ट दिए उन्होंने हमारे वाले 20-20 पॉइंट नैस्डैक वाले चले. इट्स नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड इन अ सेंस के एरिया नहीं चले. नहीं एरियाज चलते हैं लेकिन पहले एरियाज में स्विंग्स आती थी. हाँ, अब हाँ. सिर्फ छोटा सा रिट्रेस आ. पहले स्विंग्स होती थी एरिया. मैंने ये सोच लिया कि R3 पे ज़्यादा रिस्क बड़ा, R2 पे छोटा, और अगर तो पिवट पे, जो वरना तो अभी जैसे मार्केट है अपनी S1 से निकल गई है, S1 से ऊपर गई है. पहले एरियाज नीचे आ रहा है. मूव करती थी. मेरी दिवाली है ये कल है. अच्छा. दिवाली आपके पे आउट तो बता रहे हो कुछ? नहीं सर, मेरे अकाउंट ऑलमोस्ट लास्ट थर्सडे 1 वीक होने वाला है. डेड, मीन नॉट डेड, इट्स जस्ट can't log in, can't. Price went as low as 695, so it's okay, no problem. मैं फिर वो एक और फंडेड कंपनी उसका खोल के उस पर चल रहा हूँ अभी. तो FTMO चल रहा है आपका? FTMO स्टेज 2, अभी इसमें टाइम है. इतने ज़्यादा हैं कि फिर कई दिन तो वो पर्टिकुलर ट्रेड नहीं हो पाता उस स्टाइल का.
ऐसे भी में कुछ चीज़ें ऐसी समझ में आ रही हैं, अमेजिंग। हाँ S&P में ना तो वो रिट्रेस करता है ना, अब जैसे बैकग्राउंड कलर मजेंटा है, मार्केट ने रिट्रेस किया और जैसे ही लोअर हाई बना All right, let's do अगर this. जब मार्केट स्लो होती है खास में बढ़ा देगी। बैकग्राउंड कलर मजेंटा है, मैंने मजेंटा में ये ज़्यादा देखा है। जैसे ही उसने लोअर हाई बनाया ना वहाँ से शॉर्ट कर दो, लोअर हाई से शॉर्ट होगा, मिड बैंड तक तो आती है गिरते 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 गिरते। क्या कर रहे हैं? Snakes are the most popular pets in the world. Okay, let's do this. $5.25. So 20,788. 20,000 right now, 695. So base is down, and pressure is still base is up, pressure is down. Okay. As like yesterday, but even went to expected high, 20,695. Okay, where are we right now? 702. So right in between pivot point. So. $686. See you. superareas.com. Let's get started. My audio video should be okay. And guys, this is the time where you tell me if audio video is not working. And so, because otherwise I won't be able to help you while Daniel is speaking. So this is if you, I know, so 676. Okay. Zoom has been updated, refreshed, just refresh. नहीं नहीं क्योंकि बहुत करीब है तो मैं एक्सपेक्टेड लो क्योंकि गैप देखें सो वी आर डाउन टू 674 ओके
681. So it bounced from 674. So kind of your S1 is done. So S1 लेकिन अभी छोटी थोड़ी सी swing आई है. So swing S1 is technically done. The 670 zone. So came from. So S1 is done. Forex Factory non-form is really good. GTP is down a little. So went back up. Yep. Live stream Zoom is okay today, guys. Very, very important day after market because we have earnings and one of the biggest companies in the world, and both are trillion-dollar companies. Microsoft and Facebook, Meta, Microsoft, Facebook, WhatsApp, Instagram, all of that. So that swing did come. I don't know. Personally, I'm always scared with NASDAQ from too close to one bracket. So even though it came from what number, 780? Yeah. The 780 become night session high and this becomes night session low. So night session low is 674. Good morning. Now we have a number to work with. So 7 of these companies hold 50% of NASDAQ. That's the crazy part. Nvidia, Microsoft, Google, Apple. Alphabet, Apple, Amazon. oh yeah. So that retrace was there, so area did work. तो इसी का तो गुस्से में डर लगता है क्योंकि डाइवर्जन आ गई तो गुस्से नहीं good what 74 to 66 8 points $400 आज
आज आफ्टर मार्केट है बिफोर मार्केट है सर है आफ्टर मार्केट है uh, बिफोर है post aftermarket. So 4 to 5 will be the big fireworks. दोनों ही है Yeah. वैसे भी दिवाली का फायरवर्क्स तो Sir, fireworks like you never seen, because though sometime if they're in the same direction, earnings are good. Charts of Nasdaqs are just so much fun to watch. So what happens is you put 1 micro और छोड़ दो. मैंने कई दफ़ा किया हुआ है, 1 PA में 1 micro long, 1 PA में 1 micro short, hedge against the news. And I've seen both make $200 instantly. वो स्टॉक में हम रखते थे हाँ स्टॉक ले लिया उधर पुट ले ली हाँ उधर ऑप्शंस करती. उधर ऑप्शन में पुट ले ली अगर उधर गिरा तो उधर आ जाएगा हाँ उसमें भी आते थे there you go. और So, ऑप्शन मोस्टली खा जाते हैं ऑप्शन खा जाते हैं because options are very tight. टाइट होता है टाइट विंडो है ना, और उनको भी मालूम है. उनको मालूम होता है मैं क्या करता था, अभी भी करता हूँ, ऑप्शन के एक्सपायरी से पहले निकल जाता हूँ. हाँ सो लेट्स से $1 का लिया, उस वक़्त के एनवीडिया ने 1.35 का होना है फ्राइडे को. लेट्स से कि और मैं उस वक़्त 141 पे था. सो इफ इट्स 141 एंड इट्स सेइंग $1 to expire on the closest or the moment I saw the price down to like 138, the change in between was enough for me to get out. So I didn't because कितनी ऑप्शंस huh? Oh, 5 lots, make 500 shares. 500 Yeah, so my always the risk was 300, 400, 500, 300. Yeah, because I want to go quick. When you're doing future, नशा इसका चढ़ जाता है ना कि it's गोल्ड में ऐसे ही हुआ गोल्ड की चार्ट में कई बार ये रीडिंग गलत भी हो जाती है तो मैंने शॉर्ट करा तो मेरा ना एकदम लगा नहीं माइंड ने कहा नहीं ये गलत हो जाएगा उसने 400 उड़ाए और मेरा ये मैक्स होता है मैंने उसी टाइम पलट दिया नेक्स्ट चार्ट में वही 800 देगा good. तो वो कवर कर गया उसी टाइम अगर मैं डिसीजन ना लेता तो गलत था 20,665. भाई मैं आता लिखिए कुछ आ गई 780 से आ गई. कहाँ पे है या किधर गया 665. जल्दी वाले नहीं आएगी जल्दी क्या नाम है जैसे कि ट्रेड में नहीं और ट्रेड काट के गए आया आई नहीं कल कितने फसल हुए थे 500 670 तुझसे 700 हाँ, हाँ। 700 तुझसे 670 पे कितने फंस गए तुझसे 670 सॉरी 661 There you go. Officially, S1 is done for Nasdaq now. I'm gonna cross S1 fully. किचन में मिठाई है तो थैंक यू सर इलेक्शन 5th को है नहीं नवंबर Election. 5 नवंबर ट्यूसडे ट्रम्प का शेयर ऊपर जा रहा है किधर शेयर ट्रम्प का ट्रम्प का ट्रम्प की बड़ी कंपनी है डीजे करके है लेकिन उसकी ज़्यादा चलती है लेकिन ऐसा मेन शर्ट ही ट्रम्प का सोशल मीडिया ऊपर जा रहा है जिसके अंदर सारा 3 लाख लोग हैं वो उसी में ही पैसे बना रहे हैं न्यूयॉर्क एक्सचेंज के अंदर सारे अरे 6 S1 is मैं ले लिया अभी बाई किया. बाई लिया ना अभी आओगे पूछ के लिया नहीं 3 माइक्रो से क्या डरना है यार. 5 लिया उधर नहीं लिया अभी उधर भी ले लें But retrace, I don't know if it's a big enough retrace or not, but let's see. From 780 to, see, right now the base has switched now.
from base above, now it's before opening, your price is really down. Let's see how far it goes, but S1 is done. $650. It wants to drop more. कोई गल नहीं टेंशन नहीं लेनी बस So what are we at for ES? 5880, 5863. That becomes below S1. There you go, 644. 641. $600 is the next area. 639. Oh, बड़ी स्पीड से गई भाई. Remember, it's coming from 680, so it's 789, now 639, so your let's see if it gives a bit of a retrace. All right, 09, a little bit to go, so doesn't want to climb. रात को काम नहीं करने दिया इसने क्यों? पता ही नहीं था क्या करना है इसमें No, मैंने early enter हो गया ना 7 सेल में and then went to 780. वही ना काम नहीं करने दिया Because where do you think it's too high or too low? That's the problem. पता ही नहीं कौन बाइक कर रहा है ये आपकी बात सही है समझ ही नहीं अब इसको वापस 700 तक तो जाना चाहिए. आ गया प्लस में ये मैं भी almost -$2 ही हूँ. अब मेरे को 2.50 सेम प्राइस में Push. Good. I'm gonna sell. ये ले जाएंगे $50 तो देंगे ले लिए? मैं निकल गया. 47 Yeah. 46 ही है 51 देख रहा था चले जाने Yes. तो ले लिए 50 अबे दुकान खुली नहीं है होगी वो नहीं होगी
ग्रीन नंबर देखना है। नहीं, लेकिन कल रात फिर मैं प्रॉफिट लेके सोया क्योंकि हाँ मैंने देखा ना ऊपर बड़ा बाय लगा दिया। नहीं, बड़ा लगा दिया। बड़ा बाय लगा, मैं तो- 50 का फेंकने वाला था, फिर मैं कहा ना मुझे तो समझ नहीं नहीं, अभी मेरा FTMO ज़रा डैमेज हुआ कल फिर, तो तो हाँ। कल वो नीचे से मैंने जितना बनाया था ना 2100 1700 वापस देखेंगे। देना पड़ेगा, आपने भी दिया दे। पता क्या है, प्रॉफिट में हाँ, तो रहना ना, तो पर नो लॉस नो प्रॉफिट से अच्छा है भी आप काट दो। मैंने यही गलती करते, अब सुबह यही प्राइस आ गया यहाँ पे लिए नहीं। यस हाँ, नहीं, लेकिन जब आप 50 लॉट से कर रहे हो तो वो जैसे वो 2000 दिख रहा था, वो हो जाना था 6000 आपको। हाँ, एरिया आ गया है नीचे भी। 61 तो मैंने फिर इधर तो मैंने देखा नहीं, 97 काटे अब FTT अब खुला ना 95 आए। नहीं ठीक है, ठीक है। देखा ही नहीं, इधर 107 दिख रहे थे सामने। No, but the area was even if somebody took from 670 बॉडी था 3 दिन आज जीती है, आज Microsoft and Meta earnings. 5 4:30 बजे। हाँ, so सुबह हमने अरे 9 बजे बन के था पंजाब में मैंने तो अपना ही किया। प्रॉपर्टी $2 लेना था। ग्रीन नंबर देखना है। ये तो लक्की गिराई है, क्योंकि आज फिर बढ़ानी है। सर मैंने आपको कल सुबह बोला था ना, इन्होंने मार्केट में ऐसी हाई बनानी है, अभी मार्केट नीचे नहीं आनी, ऊपर ही चढ़ानी है, वही करके। तो मैं ऊपर 1 बजे सेल में बैठ गया, 1 बजे मार्केट उल्टी कर दी। एरिया से जो and when it was overbought, I just sold it. वही ना, फिर नीचे आ गए हैं। गोल्ड 250 करता। 250 हो गया। हाँ जी, 250 एक बिक गया। 2797 है अब। 2797 है, 250 एक बिक गया। मैं देख चुका है 250। हाँ जी, 250 एक बिक गया। ओह, बस अब नहीं करना, अब क्योंकि 200 का ही डिफरेंस है, हाँ। 3000 तक अब रिस्की होगा, या तो सेल ही। no, people will push it up because now remember, majority people are thinking sell. अभी चढ़ा They're gonna push it more. या पर मैं कंजर्वेटिव हो जाऊंगा, बहुत वाले हैं इसमें देख। भाई साहब, look at ठीक था। मैं तो कल मैंने 500 का थप्पड़ भी मारा ਸੀ 400 कुछ का। अच्छा मैं थले आ नहीं, पर मैं माइंड में स्विच किया, ये मेरी गलती है, मैं रिवर्स करता फिर तो सही है रहे हैं। 800 दे गया अब तक। जी मैं सर, हट जाता खत्म मेरे को से। थोड़ा सा वो सीखना था, मैंने थप्पड़ अभी स्टार्ट लगाना जरूरी है। क्या चीज़? नहीं, और Okay. जब भी आपके पास हाँ, हाँ, सिर्फ no. मुझे आप एक दफा बता देना ना कैसे प्रॉफिट ही कर देते हैं, आपने वीडियो देखी? पर इधर देखिए, से अपना लेकिन वो बीच में कट कर लैंड कर नंबर करके तो देखिए, पहला लेकिन ना 51 Okay, मैं आपको 11 की बात कर रहा था। जने मैं स्विच जो किया। ਤੁਸੀਂ ਗਏ ਜੇ ਨਾ $1950 ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਮੈਂ ਕਿਹਾ 1000 ਬਣਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਡਬਲ ਬਣ ਗਿਆ 1 ਵਜੇ ਏਰੀਆ ਆ ਗਿਆ ਏਰੀਏ ਚ ਵੜ ਗਏ ਉਹਨੇ ਏਰੀਏ 700 जो सर कहते हैं ना रफे सर, नैशदैक सिर्फ एरिया, 680 हाँ? बस मैं तो एरिया, वो जो करते हैं उधर ही कर देते हैं। अब एरिया सुबह अब आते ही मैंने पूछा आ गया एरिया, इसको देखा 3% डाउन था नीचे, मैंने वही पे लगा दी। नैशदैक तो बिना एरिया के मारते हैं। Either or overbought, oversold with the first swing miss. हाँ जी, Yes. न्यूज़ नहीं है ना, फिर ओवर बॉटम Yeah. न्यूज़ नहीं है कोई। No, today was heavy news. तो इवनिंग को है ना सर, आप ही जाना है, उनकी भी न्यूज़ माइक्रोसॉफ्ट का भी अच्छा ही आएगा रिजल्ट। Let's see. क्या गुड आपने ला क्या हुआ गैलरी में ना इतने टाइम के बाद मिला Gold, what's the area for gold? I want to see. Gold says if you want to sell from 34, wow, or 17 at least. 28 37 पे चल रहा है। नहीं, 28
37 extreme high. उस पर सेल लगेगी। इसका जो लेवल नीचे रुका था ना, जो मैंने ऑब्जर्व करा है 2752 इसका बहुत सारा रेसिस्टेंस, क्लियर हो गया अब वो 70 पे आ गया। 280 हाँ मैं FTT कर रहा हूँ FTT तो बहुत सारा कौन सा वाला लिया था सबसे छोटा वाला बड़ा वाला FTT सेल लगाया 5 मिनिमम पैसे पहले कैसे ही ले रहे हैं, लोगों से भी देना है, आगे यही कर रहे हैं। जो चल रहा है उसी बहुत में अच्छा खोल दे दूसरे में बता रहा हूँ। लाइव स्टार्ट कर दिया था हैं? अभी नहीं किया नहीं, लाइव है, लाइव। पेशेंस टेस्ट करता है, गोल्ड पेशेंस टेस्ट करता है। गोल्ड की गारंटी नहीं ना, ऊपर जाते जाते नीचे है। नहीं ऐसा नहीं है। ऊपर जा रहा तो जाएगा। जब बैठा है तो सो जाएगा 8 घंटे 9 घंटे भी सोता रहेगा, जब खाएगा तो नीचे गिरता है ना सर, पानी की तरह गिरता है, पता है। पानी की तरह गिरता है। नाश्ता भी पानी की तरह गिरता है, गिरी जाता, गिरी जाता। The short is better for Nasdaq. वो गिरता है ना, अब 3-4 दिन से गिर नहीं रहा, मजेदार। ये तो मजेदार गिरेगा तो फिर वो भाई में बैठे होते हैं जब गिरता गिरेगा। No, the last time Nasdaq fell was October 23rd. Almost 1, 2, 3, 4, 5 strays, no movement. S2 है अभी, हैं? S2 एरिया ST almost close to 640. शाम को तो देखना नहीं जाके अपना चार्ट ਇਹਦਾ FTT ਹੈ ये 400 ਦੇਖ ਹੀ FTT ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਪਾਸ ਹੋ ਗਏ अब website. ਸੁਪਰ ਏਰੀਆ ਤੇ ਹੈਗੀ ਨਾ ਉੱਥੇ ਕੋਲ नगम पास करता ऊपर अपने प्रोफाइल पे जाओ, प्रोफाइल और ग्राफ बनेगा जो साइड दूसरे पासे फ्रीडम बॉक्स में फास्ट ट्रैक नीचे नीचे ग्राफ लिखे हैं ना, ग्राफ ऊपर वाली जगह सबसे ऊपर ये तो नीचे जनरल है जनरल हाई पे गिरता ग्राम नहीं जनरल है, ये नीचे नीचे जाकर देखो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 दिन हो गए पर पैसे नहीं वार्निंग कोई नहीं हुई सर The warning is the 415. यस क्यों गोड़ दो फिर 1% बता रहा है, एक दिन का लूज लिया हमें प्रॉब्लम, एक लॉस है, बाकी सारे प्रॉब्लम है। 1 2 3 4 5 6 7 8 दिन की बिलिंग पे हैं, चलो हो जाएंगे। No, no, I mean short. शॉर्ट मैं जैसे वो उसने ओवरबॉट हुई
मिड बैंड टेस्ट हुआ, फिर मैंने सेल कर दी। No, seems fine, but keep your hotspot on in case. माउस नहीं यूज करते हो? No. आदत तो बनी नहीं है। हम लोग स्टॉप लॉस नहीं लगाते ना। कहीं पे देख के काट दिया बस। हाँ। All right, so in about Daniel is gonna start speaking soon, and then we will look at what to do next. So, night session low for Nasdaq is 639, and night session high is I think Nasdaq should come down 300 points today. I will. Hopefully. What is night session also? 788. It's really high. Remember we were sitting for 700? Yeah. I went home and I shorted and then I got stuck. Even though I had done all the trades, I still shorted and got That was my last death trade for 700. Did you guys get a 600? No. But you waited for 700 to Yeah. short, right? I enter at 694. And then just give me a little bit more. I'm not sure. Yeah, last night before going. I did it like 5 lots. But then it went to 640. Yeah, like that one 640. So today again we will wait R1 maybe to sell, or will it go to 960? I doubt it, but again this is the highest number of Nasdaq is 985, right? So 95 when? give me a second. 19,000. $20,000. It should come down now. Yeah. Long. Guess that's the area again, right? Long हाँ, for यहाँ. 650. मैं भी लॉन्ग के हक में नहीं हूँ। नहीं हो माना तो निकल जाना है ना. हाँ ये अभी 3-4% है ना, ये थोड़ी नीचे जाएगी. इसके बाद ये ऊपर निकालेगी थोड़ा, उसमें निकल जाए. All right, Daniel, his mic is on, so I'm gonna go on mute. See you guys on 5 minutes. You're gonna rip the 600, right?
Don't worry, he hasn't started speaking yet. So 4 more minutes when the stock market opens. Six days left, US election. Yep. Friday, November 1st is gonna be crazy. Good morning, guys. Good morning. Assalamu alaikum, namaskar, sat sri akal. Hello, guys. Came chill. Microphone check. If you can hear me, guys. Ji, walaikum salam. Jin, ji, walaikum salam. Taimur bhai. Mahib, good morning. Ranjit ji, Ash. Good morning. Choi Saab, Gurpreet, good morning. Manpreet ji, good morning. Jesse ji, good morning ji. Rabbi, good morning. Amir bhai, good morning. Gigi, good morning. Arun, good morning. Shinder ji, good morning. Rizwan bhai, Kamal bhai, good morning. Jagdeep ji. Saif, good morning. Nadeem, Akshay, good morning. Majid, Clifford ji, good morning. Zakir, good morning. Altaf bhai, walaikum salam. Murli ji, good morning. Amrit, Samir bhai, good morning. Ashwan ji, good morning. Kuldeep, good morning. Jasjeet, good morning. Sarv ji, good morning. Ji, Sunil, good morning. A quick review of our disclaimer, guys. All material and posting on our web service or our training floor not attended as trading advice. They're just meant to enhance your trading decision but not make it for you. And we take no responsibility for any profit or loss. You're solely responsible for all your actions. And don't think you made money yesterday, you'll make it today. Always be on your toes, always place your stops, and always ready to accept those losses. And do what you see, don't do what you think, and treat this market the very first day you trade. And guys, today our S&P 500, NASDAQ, Dow, Russell 2000, or any market areas what we are giving you on our superareas.com are not treat as trading advice or financial advice. Those are just for information and educational purposes only, and we take no responsibility for any action taken by any subscriber. Today our high is for S&P 5912 to 20. Low is 5840 to 30. Base is up, pressure is down. Base is up, pressure is down. A big push to the upside, 356.25 points on NASDAQ. S&P 55.5. Yesterday expected high for the day. NASDAQ went to extreme high and a retracement. Right now just cover up 42%. NASDAQ almost 42%. S&P cover up 56% and still pushing down and further push to the downside. NASDAQ got the big hit. If you look at the, Dow got the big hit to the downside, and a beautiful push to the downside on our
Dow area. And today 10 o'clock pending home sales is coming, and remember this is the first Friday is coming on. This Friday will be our first Friday, so that's where we'll see either push to the upside or to the downside. So far it's giving us our automatic data is giving us huge 233 job creation, and then we have advanced. Our GDP is not good. GDP is not good. Our GDP price index is not good as well. It says it's balanced, but it's less than the previous one. But overall, right now our S2 area, if you see, very close to S2 area is holding the market right now. Both markets, if you look at the Dow is 600 and it's 630, just sitting at 600 is somewhere green midband, slowly is just slightly below the green midband area. So Nasdaq high is 920 to 960. Our low is 500 to 450 for Nasdaq, and this is all retracement. Remember yesterday that push we had after news. If you remember yesterday everything was down, but news took everything to the upside. We got CB consumer confidence way before, higher than the previous one, and then job opening was less than the forecast, less than the previous one, and shoot to the upside. And earnings also today, Meta earnings and other few of our big stocks earnings are coming today. So today our crude oil, if you look at the crude oil, we have a very nice push to the upside, very close to our expected high for the day. And actually this was our yesterday high area where the crude oil is sitting. Now gold crazy hit 2801 area that I was telling yesterday, if you remember, that maybe today, tomorrow, or in this week we'll see 2800, and that's a round figure. So gold has to come down somewhere our expected low for the day, and that's where we have this very nice push. Did not test our night session high. I'm talking about this bar opens at 9 a.m. It went up and shoot to the downside, break our night session low area, and still pushing towards downside. Gold, British pound hit our expected low. For actually it hit high this morning. Our European session hit the high and then at expected low for the day. Canadian dollar 4 years low. Got in COVID we see this low. In 20 we saw this low, and right now again it breaks that low and going below our 71 cents and 800 area. Euro, same thing. European session exactly, if you see, after 6 o'clock hit our expected high for the day, and right now at our expected low for the day. Very nice. Euro went up, creates a diversion and push to the downside. Natural gas nicely hit our expected low. If you see, very nicely hit our expected low for the day, in between S1 and S2 area, and just paused at, if you see, 77 cents, $2.77, and natural gas, our low for the day was 79 to 75 cents. So in between, if anybody want to go long, just you can go long from there. But best is let natural gas to come below. Remember, 65 would be a very nice, beautiful area for our natural gas to bounce back up. Somewhere 65 cents, $2.65 would be a very nice area for natural gas to bounce back up. Right now, Nasdaq pushing down, S&P is pushing down, very close to S2 area, and the Russell 2000 is dead, not going down, even it's going up. Now in these days, remember previously, it's same as like right now, this era. Previously we had family and family members like one punch, like a big strong punch, and now one is running there, other is running there, and everybody is thinking about themselves, and same thing going on, same human psychology is right now in these markets. Nasdaq is going down, S&P is going down, as the trying to, you see how the ripple effect is at the blue box on our Nasdaq, and S&P, a green box is there, S2 is there,
and getting tough time. But overall, eventually these prices has to come down because of the yesterday push that went to the upside. In my opinion, it has to fill up that push and give back that push towards our expected low for the day. So Dow is 389 points from yesterday high. It came down to our yesterday low, very close to yesterday low area and S2 area, and holding by S2 area. Russell 2000 base was down, pressure was down, but right now the base is up. It's going above our green mid-band and PP area. High to go low, again, high to go low would be a good strategy. Area hit and run from S1, S2. Yes, you can hit and run. It's at S2 area, but the best is let it go up. High to go low would be a good strategy. Please guys, take the areas. If you have any question, you can call me or you can text me. Tomorrow, Thursday, we have Challenger job cuts is coming, core PC price index is coming, and then we have 945 Chicago PMI. Personal income, not much impact, but Chicago PMI at 945, and then the blasting day will be our November 1st. Non-farm employment change is coming, ISM manufacturing, PMI is coming. It will be a very, very volatile day, Friday. So just go with the news color, don't go against it. And please guys, take the areas. If you have any question, you can call me or you can text me. I will be here.
सारी ले जानी Sorry, I wasn't even speaking. So it's just our charts here went down. So waiting for price to go to expected low. What do you think? How many points do we get from expecting low? At least 10 points minimum. सारी मार्केट ले जानी ऊपर ले जाओ What? Okay, charts are back up. सारी ले गए मार्केट Yeah. So went as low as 543. Still, I'm not going long personally. I'm going to stay in short. लॉन्ग की ट्रेड निकलने लगी है So I am staying in short all day today. शॉर्ट ही करना है But high to go low. When he says high to go low, I go high to go low. Trade to 5. So what's प्राइस the... बनानी होती है मार्केट में आज काम कराना है ना ये उन्होंने All right. So 600. उसकी अर्निंग जुड़ा है निकले हैं हाईएस्ट 900 है Who is the next after this earnings big person is Apple tomorrow and Amazon. एप्पल इज जुड़े Apple is tomorrow. Apple, Amazon tomorrow. Today is Microsoft and Meta. So 4 to 5. Big. Did you say? हाँ बता बता इधर से ही आ जाए डजंट मैटर मैं क्या मतलब स्टार्ट नहीं करना हाँ जी सर एफटीटी ये 1.5 लाख वाले अकाउंट है ये छोटे वाले हाँ। 1500 वाले इसमें कितना कितना यूज़ करना मैंने 600 बड़े का 600 वैसे बड़े का मैक्सिमम 600 कैप है ना और नीचे का ठीक है जो नीचे का 300 नहीं था है नीचे का 300 है ना तो थोड़ा सा माइक्रो सा लूज कीजिएगा एकदम ये ना हो कि स्लिप लगे और आप सेल में थे ना नहीं नहीं ईएस में बाय करना ईएस में बाई किया था गुड 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 एरिया से उसने लो हाई बनाया नहीं था एलएच नहीं बोला था उसने नहीं एलएच बोला नहीं था अभी बेटा रहा और उसको मिड बैंड को क्रॉस करना चाहिए तब होता है मैंने बोली इट हैज टू क्रॉस द मिड बैंड उसके क्रॉसेस करना चाहिए now we are stuck in S2 see it is completely opposite from yesterday we were stuck in R2 trying to go to R3 now S2 stuck in trying to go to S3 but let's see which way they want to take this I'm in micros back to 600 so we're back to which area we are back to S2 सेल लगाने सब 650 is valid? sorry 650? 650 is done Is done? if it coming from the bottom then maybe as a resistance but not as a support It's gonna come like from 570. so yeah so 650 you would think of selling
Look, it came from the bottom, it hit the ceiling 600, came down, right? Yeah. बिल्कुल ऊपर ले जानी है उन्होंने मार्केट Let's see. ले जानी है ऊपर करना क्या है जी टीवी का ऐसे ले गए Yeah, back up to 606. और में मैं शॉर्ट में हूँ अभी 600 से अभी की मैंने लैंड में किया था 30 लेके नहीं फिर ऊपर जाएगी कुछ करूँगा maybe 650 it will bounce back down from, let's see. Let me try my charts now here. What's that? नाइट्रो जीसी का सिंबल क्या है GC.comex. वो किया Yeah. है यस Okay, मैं वो उसमें आर ट्रेडर में है हाँ उसमें नहीं आ रहा. हाँ मेरे पास मैं एक So सेकंड. no, Yeah. you do it after 11 o'clock. देगा Yep. Back up to, so didn't hit expect. Now R1. Let's see if it hits R1. Coming from the bottom. चलो मैं सभी ट्रेडों से निकला हूँ मैं फंस गया है मैं निकल गया तो ये लेके 570 पे लिया 620 पे निकाल दिया अभी बच गए निकल गए 400 देखे गया है। हाँ, ठीक है। मैं इधर पर आया हूँ मैंने एवरेज कर दी थी 2 लॉट से। 447 बन सर गए। बड़े अकाउंट का फायदा यही है। ले जाने तो जितना हाई देके जाना कल ट्रेड लगी $622 बन गए 622 ठीक है बड़े 75 है डेढ़ लाख बड़े ना 32 बंद बंद कर दो बाउंड बाउंड ले ले बच्चे का एफटीएम की ट्रेड 900 महीने चल गई देगी 4 से 9 छोटा में बंद कर दिया। एफटीएम All right, charts are back up. और बंद कर दिया। एफटीएम मैं बंद ही कर और डेमो से आना हम लिया जाओ दिया। क्यों मार लिया? चलिए जल्दी काट देंगे गोल्ड गोल्ड कितनी करिए अकाउंट
कल 2000 में आया 1700 खरीदना छोड़ बढ़ाया 450 रुपये पर ऊपर जाइए आ रही है There you go, back up to, from S2, it went back up to S1 top, 632. लिमिटेशन होती है ना होल्ड भी कर लेता है लिमिटेशन होती है ना होल्ड कर लेता है 3 लाख से करना कैश लेके 3 लाख की बर्थडे तो बड़ी मांगा ना मेरे मांगा छोटी माइक्रो मारा नहीं नहीं मारा नहीं किन्ने का 10 का एक तो 20 का एक था 2000 का तो न्यूज़ आ रही है Hmm? एक न्यूज़ आ रही है News? pending home sales Yeah, let's see. In 1 minute, news funding pending home sales. Let's see. It's a medium impact? Medium. Let's see which way it goes. So is it ready to go down or up? Red to go. गिराई पता नहीं क्यों इतना मार्केट प्रॉपर्टी से सारे बायर्स सब बाहर ही है सारे लोग बोल रहे हैं मार्केट में जो बायर्स ज़्यादा सीखे ना दिखते हैं मिलते नहीं ना सारे बायर्स स्टैंडर्ड ज़्यादा मैंने प्लेट कर नहीं इतना चढ़ानी मार्केट आपकी अब इतना नहीं है वो खाने भी चलेगी Yeah, back up to S1. Green? Going to go down? Let's see. आप ही जानी है न्यूज़ ने का कोई फैक्ट नहीं पड़ेगा Yeah. 100% श्योरिटी थी कि 4% भी आधा चीज लगी ऊपर ही जानी लेकिन मैं 100 ही लेके निकला छोड़ देता जाने ऊपर पर उतना इको दम करा यहाँ सेल लगाए सर बनता है ना 650, yeah, it's testing the. 647 Let's see if this becomes a resistance. So, Meta is $600 a share. Meta is up. Google is up $10. Amazon is now up. Everything is back up.
What a full swing from the bottom to top to the bottom. So 760 is our number, night session high. And NASDAQ went back up, ES went back up full 28 points. Wow. Yeah. So ES 5874. What's the area for ES? Yeah, anytime. Hopefully ES and NASDAQ both should retrace now. Let's see. दूसरी पैटर्न बना हुआ है सर। तो FTT करते कर 4% RSI की 47% RSI होगी। 570 की है तो उतना ही आ जाने। वो अकाउंट की लिमिटेशन प्रॉब्लम है। ये 3 चीज़ है। To touch 670 almost. Sitting down. अकाउंट चला था FTT का? Yeah? FTT ये तो सर वो कर रहे हैं। I think something is wrong. ये पैसे नहीं देंगे सर आपको मुझको लगता है। इस चीज़ को 60 के
So 668, 670 minus 543. 127 points swing back and still rising. अभी ना सेल लगाने का No, I'm still wearing either 760. 760 Night session high. Because ES 1510 is severely overbought. It's right at the guardrail and still climbing after 32 points. Let's look at ES 3020. एप्पल डाउन है एप्पल डाउन चल रहा है 73, 74. टेस्ला भी डाउन नहीं, टेस्ला तो वो लोग टेक प्रॉफिट कर रहे हैं ना. नेटफ्लिक्स भी डाउन है एनवीडी भी डाउन है अब जाके थोड़ा सा ऊपर जैसे ये बना है ना ऐसे ही वो बनाया है सारी मार्केट ही ऐसे ला दी सेम पैटर्न कैंडल का हाँ, नीचे गिरा के ऐसे पैटर्न बना दिया जैसे ये बनाया went back up. Where is ES is going to? नहीं, मैं सिर्फ ES की retrace देख रहा हूँ. ES is 80, 87. Like look at. नहीं, कहाँ से? 76 से किस रीजन से? हैं? Sorry? ओके, लेकिन एरिया अगर आपका 87 बनता है, अगर 76 थोड़ा ES में आना, बस नैस्डैक अगर नीचे आ गई तो आप आनी शुरू हो जाएगी. आ रही है सर इतनी हाई की है ना फिर थोड़ा प्रॉफिट लेंगे अब आना चाहिए इसको. आप ब्रेक इवन में होंगे, बिकॉज इट शुड कम टू द मिड बैंड नाउ. शुड कम टू द मिड बैंड, लेकिन आपने मिड 73 तक निकल जाना, बिकॉज द मिड बैंड इज सिटिंग एट 73. Now it just depends on Nasdaq, which way it wants to. Well, it went back up to the.
Now we are stuck at S1. मैं तो सर क्लियर है? मैं तो नहीं ठीक है. पर ये आएगा झूला का भी झुलाएगा जलाएगा नहीं So I'm just trying to see how high can I go to sell. जलाई जाएगा आई जाएगा एक बार कल की तरह 780 तक जो था इसका ऊपर जाएगा ऊपर सेल करने का ना आज प्रॉफिट ले रहे हैं सभी मार्केट कंपनीज डाउन है आप को एक बार गिर जाएंगे फिर बढ़ जाएंगे डबल बायर भी बने होंगे ना कई जो ब्लैक पे लोग डबल कर देते हैं चलो देखते हैं. I'm just seeing if this becomes a resistance or a support. If this becomes support, then we'll get to 760. If this is a resistance, go back down to S2. So, in a position like this, I don't look at charts, just numbers, because this. चार्ट तो काम नहीं करता ना नहीं, NASDAQ में तो आपने क्या चार्ट देखे करना है, unless it's overbought, oversold, but. और लाएगा 778 फॉरेक्स में नीचे फिर ऊपर 100 पॉइंट की स्विंग है नीचे तो आएगी फॉरेक्स और गोल्ड वो तो खरीदना ही नहीं है अब गिरेगा तो भाई लेंगे बेचना है नहीं वो लेना है इसलिए ट्रेडिंग ही करना है यहाँ करे काम भी नहीं करने दे रहा है यहाँ Look at ES, went back 35 points. That's happened. 35 पॉइंट अप चली गई है One single shot. आपका क्या चल रही है कहाँ से नहीं, against the trend sell किया. नीचे से जब ऊपर जा रही है 400 प्रॉफिट हो गया था प्रॉफिट, हो चुका. हैगा सी हो गया ना ले आ नहीं और ये 100 नहीं चली है पहला कट के कितने बनाने में रोए Stuck at 670. प्रैक्टिस कर रहे हैं लेजेंड से मैं भी करांगा लेजेंड उसके फॉल बने लेजेंड 10 up, 10 down, 10 up, 10 down. लेजेंड भी प्राप्त ये लेजेंड करांगे थोड़ा करंट तक ना आ रहेगा और आएगा लेजेंड मूवमेंट से चले डेली को चाय पानी पीने तो 11 बजे के बाद कर लेंगे स्टेबल हो जाए तो तलवार लेके बैठे हैं इस पॉइंट पे ना सेलर बैठे हैं सारे छोटा पॉइंट हो गया छोटा अकाउंट हो गया था ना इसी मामले में नहीं, वो तो फिर माइक्रो करना पड़ेगा, otherwise it's not worth it. बैठ रहा है तो ट्रेडो ही ना आ गई 670 has become a strong resistance. Doesn't want to break.
लाइन लगा के 12 पॉइंट नीचे आ गया, पर ज़्यादा आ गया था, 18 पॉइंट 20 पॉइंट नीचे आया था, 20 लगा के फिर चढ़ गया, कितना लगाया जब वो टिक पाई 70 लगा के निकल गया ऊपर से, अभी 78 पे 8 पॉइंट के ऊपर। नो फ्यूचर होता है। कल जिन्होंने सोना लिया आज वापस भी नहीं जा रहे। अभी तो डे ही खत्म कर दिया आपका, जब अभी टाइम खत्म कर दिया ट्रेड का, सवा 10 फंसने वाला काम कर दिया। So the highest it breaks is 676. There you go, 680. मेरे पास लगेगी भी लगा। 682 for the morning high. 300 कल बनाया, 100 बनाया, 15-17 दिन भी बनाना, 1500 450 और 300-400 इतना भी बन गया। ये सब दिन तो फिर भी करने पड़ेंगे। हाँ तो पूरे तो करने ही पड़ेंगे। 7 दूनी 14, तो 200 तो बना लेना, 7 दिन तो करूँगा। Again up to 700 range. और वहीं से वापस कर चलेगी 50%। पर ये 100 पॉइंट की स्विंग भी कितनी गई है? 50% होगी बात करो। हाँ? 50% हद तक चली गई है वैसे। नीचे 4 नहीं नहीं चाहिए थी 4% थी, बाई लेनी थी, मैं लेकर थोड़ा जल्दी से उधर भाई। Oh my God. Go to night high, man. There you go, broke 682. बाहर आ गया बहुत ज़्यादा। ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, 600-700 का डिफरेंस है। 684. इलेक्शन की कमी है 50-50 है दोनों और लैंड 685. ये जो बड़ी बैट चल रही है ट्रंप दे ट्रंप फेवरेट I'm just watching the candle on 60 minutes, full down, full back up.
Yes, if you have to exit, exit at a mid band because that's you have a diversion to the downside, but let's see. 37 point swing one way. There you go. 687, back up to pivot point. 692, almost back up to yesterday's evening low, almost 700 now. There you go. See yesterday's area, we're back to Sam. It came pretty early today. Yeah. No, but this was, it went down from here. Yeah. So 760 is the number to watch for. R1. Should I take 1 mini? 5 micros I would do now. This account size is not big enough. It should come down. ES has to give it a retrace. It is insane. ये 3 दिन सर बहुत डिफिकल्ट मार्केट है आज कल भी इलेक्शन तक तो ऐसे ही चलेगा मुझे तो लगता है कुछ भी नहीं करना है इलेक्शन तक तो हाई बना के रखनी है बड़ी Let's see if it tries to test. See again 670 from R1 down to S2 back to R1. Incredible. Retrace is not coming. He has tried to do couple of retraces, but अभी 25 पॉइंट भी दी है Stay away from the market, carry ये काम ना करो अभी इस टाइम चल नीचे अब शॉर्ट में मैंने कुछ भी मैं तो अभी बीच में मिडल में है ना मार्केट किसी तरफ चली है वो तो ट्रेड से ही निकला था ऊपर ली हुई थी आपकी उसमें निकला ही $40 लेके तो यार डाला माइनस हो गई अब गिरी नीचे से लेने की हिम्मत नहीं पड़ी कभी ये रुक के लेता ऊपर ही चलती थी मेरा कवर ही कर now I was waiting for 500. That got missed, and now I'm waiting for 760. How many average कर ली थी? Again tries to test. Look at the ES candle 15th and it doesn't even know which way to go. There you go, we're back up to 700 and the market is 0 point. So -1 and now we're in positive. 760 is the number to watch for.
Another trade I'm short from 650, but it's not going there. वो लंबी बाई बनी हुई है सर इसकी। ये 1 नंबर का चार्ट देखो ना, तो अभी 4 नंबर का चार्ट ऊपर है। A1 में हाई लगी हुई है। ट्रेड पे जाना फिर इन्हें ठीक सी हो इस करके बैठे रहो। ब्रेक नहीं हो रहा। No, 700 is pretty high, but let's see. Well, last night around 2 o'clock, this was the price. नहीं शाम को कल 2 p.m. around 700. And then at night it went to 780 and then 780 is the highest. yes. बस 110.900 कुछ लगा है ना highest. एक रिपोर्ट गलत आई तो इसमें BCR पे लगा देंगे आज। एक भी रिपोर्ट गलत आ गई तो BCR पे लगा देंगे। फिर नीचे से परसों वाली में जुलाई में तो डे आफ्टर आएगी। Tries to break nights 700. कम आने के चांस है। देखें which earning report comes and does what. Microsoft, Meta, too big. पिछली बार भी मार्केट दो हिला रही थी। एक ही मार्केट एक ही कंपनी ओनली हिला रही थी। Tesla alone. Because 7 of these companies represent 50%. यही अमेरिका चला रही है। सारा चला ही रही हैं ये 7 कंपनियां और कुछ भी नहीं। ले जा भाई 100 पॉइंट 50 पॉइंट नीचे कुछ। No, it's just stuck in one candle. $1,650.
Hopefully 10:45 to 11 we'll have a reversal, but let's see. Meaning whichever the market is, generally the reversal is first reversal as per the book, 10:45 to 11. No trade, I will go. No trade bana दूंगा. Come on again, 10:10 up. करेंगे हलचल थोड़ी काम में जाना है ना मार्केट में. Exactly. करेंगे कुछ हलचल. नीचे लेके आएंगे फिर मार्केट में थोड़ा सेलर बायर बैठाएंगे. अभी रुकी हुई है मार्केट. There you go, a little bit, nothing much. Back to S670. अमेज़न प्लस लेना शुरू हो रहा है. उसका आ रहा है ना रिजल्ट आ रहे हैं. वो प्लस में Amazon tomorrow. तुम्हारे पर उस पर रिपोर्ट टेस्ला ऊपर चला गया सर. वो ले गया मार्केट. ओपन 258 पे 262 हाई. वो ले गया मार्केट को. नेटफ्लिक्स थोड़ा It's like 90 points away. right now. Sorry? 90 points away from 7. Yeah, it's okay. It will test your patience. That's what it's doing. बाय किया वो. Issue is this is the time to get trapped. Either direction, long or short. We have no idea which way it's gonna go. So you think it will go long, they will take it short. You will think it will short, it will take it. Like so, with that number, you have more possibility of, you could say, oh, it's heading towards 760. Why don't I buy? But look how many times it tries to break 700 and it is. And I can't even enter mid-band on NASDAQ. Look, it just changes too fast, the color. Doesn't work on that. And it's not giving me overbought, oversold swings too. So my only option is right now to wait for an area.
I always wonder who is coming up with the money to buy. बहुत पैसा लोगों के पास है। नहीं लेकिन यार ऐसा पैसा तो है, कल तो नहीं। ले लो, देखते रहेंगे दो चार। Like gold to go to 2801. Like I mean, I'm sure somebody bought it at 2801, right? And आज बेच रहा हूँ। आज बेच रहे होंगे। ऊपर से नारायण पिए गए। एक दिन नीचे 2700 तक ले आए ना। 2700 बहुत थोड़ा बहुत दूर है 2700 तो। इन्हें 20 पॉइंट ही बस। 70 से। There you go. Tries to break 700 again. From 1050. $100 होना ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਟ੍ਰਿਪ ਤੇ ਲੌਂਗ ਕਰਨ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਤਾਂ ਵਾ ਜੇ ਤੇ ਜੰਗ ਲੱਗ ਜੇ ਤਾਂ ਲੌਂਗ ਕਰੀਏ 골ਡ ਇਹਨੂੰ ਲੌਂਗ ਕਰਨ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਲਰੇਡੀ ਬਹੁਤ ਹਾਈ ਤੇ ले रहे हैं No, they can, but again, 70 to 60. It needs to go to like 600 to be able to make a difference. 10:45 पे जो कैंडल बनेगी ना 15 मिनट Yeah, so 10:45 candle, 15 minutes, and आ गया अब कितने पे एवरेज है आपकी मेरी तो निकल गई थी वो वाली। एक लगी हुई है 650 पे। 650 तो आ गया हाँ हाँ 650 तो आ गया 10 up, 10 down. एक वो लंबी नहीं ना दे रहे थे Yes, 1, 2, double divergence, but no chance of coming. Again tries to test. हम निकल जाएंगे लगे जाएगी और आप ही का वेट कर रही है
न्यूज़ वाले दिन ना बस ठंडा कर देते हैं न्यूज़। तेज नहीं होने रोकती जब मैं सवेरे सवेरे कर लिया बात जाए ना इवनिंग नहीं करना हुआ नोट रखने की जगह नहीं बची। ट्रेड बस वो बंदे सवेरे सवेरे करो तो चलो पैसे बना जाओ उसमें जो फंस गया निकल गया और क्या बात कर रहे हैं। सारे दिन की ट्रेडिंग पर बैड ट्रेडिंग में भी है। हाँ बेटर मेरे हिसाब से अपनी सही बात है। टारगेट हो गया अपना माइंड का टारगेट बना नंबर ऑफ ट्रेड ज़्यादा हो रहे हैं वो भी गलत। सारे दिन की पैंट से नीचे आ गई पैंट से नीचे आ गई उसका खाया लोग बनाया ये ट्रेड में डबल डाल दिया ना नेट एक ट्रेड भी वाई थी एक सैल की थी दो बंद कौन ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ 10 ਕੀਤੀਆਂ ਰੋਜ਼ ਦੀਆਂ हाँ ਤੇ 20 ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਉਹ 6 20 ਕਰਦਾ ਇੱਕ ਬਾਈ ਸੈਲ ਤਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਮੇਰੇ 25 ਹੁੰਦੀਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਤੋਂ ਲਈਆਂ 12 ਹੁੰਦੀਆਂ 12 ਦੀਆਂ ਡਬਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਇੱਕ ਬਾਈ ਇੱਕ ਸੈਲ ਐਵਰੇਜ ਵਾਲੀ ਵੀ ਐਡ ਹੋ ਗਈ ਐਵਰੇਜ ਵਾਲੀ ਵੀ ਐਡ ਐਵਰੇਜ ਵਾਲੀ ਸੈਲ ਵੀ ਐਡ ਚਾਰ ਹੋਈਆਂ जो एक पेट का उस टाइम पे हिस्सा वो ਜਿੰਨੀ ਵਾਲੀ ਕਟੋਗਾ ਸਮਝਤਾ ਉਹ ਐਡ ਹੋ अगर ਗਈ आप फ्लोर बना देगा ਦੋ ਇੰਨੀ ਵਾਲੀ ਦੋ ਕੱਟਣੀ ਤਾਂ ਹੈਗੀ ਆ ਲੈ ਗਏ ਸਮਝ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ 59 शुरू हुई वहाँ पर जाता 9:30 निर्णय की मूड है यार इसके में थोड़ा हेल्प करेंगे तो ट्रेड करेंगे No, otherwise, बाकी सब बारे but if because everybody is watching the same thing we're watching, right? So if there's no liquidity, no nothing, they're just gonna so. Go to 600, go to 760, कुछ करो भाई. यहाँ से दुखी हो गए लोग बटन दबा देते हैं इतना दुखी हो गए कुछ ना कुछ डिसीजन ले लेते हैं यही जो करना ड्राफ्ट कर रहे हैं ਇੱਥੇ ਖਰਾਬ ਕਰਨਾ ਹੈ ਨਾ वहीं ड्राफ्ट कर रहे हैं और वहीं से मार्केट हुए इमोशनल ट्रेडिंग ਇਹ ਕੋਈ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਾ इमोशनल ਇਮੋਸ਼ਨ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਹੁਣੇ ਬਾਏ ਚ ਬੈਠ ਜਾਣਾ ਵੀ ਥੱਲੇ ਆ ਗਈ ਇੰਨੀ ਕੁ ਬਾਏ ਹਾਂ ਯਾਰ ਹੀ ਨੀਚੇ ਆਏਗੀ 50 पे आएगी अब लेफ्ट क्रॉस टारगेट देखिए साहब सही कहते हैं रिवाइंड रिवाइंड इमीडिएटली ले जाएगा कोई किसी तरह $664. कितने यार मैं 36 पता नहीं क्यों गोल्ड अरे भाई उनको सुन के नहीं मैं कहता कि यार गोल्ड तो स्मूथ होगी नहीं जितनी स्मूथ आपकी ईएस और नैस्डैक है ना उसके बाद सर आप एरिया से वेट करें 100% प्रॉफिट देते 760 का वेट करें या 500 का वेट करें तो एनीथिंग एल्स यू विल गेट स्टक 100%. मेरे को लगता है आप उधर कमा के ना गोल्ड लेके चले जाते हैं
मैं गोल्ड में पैसे देने ईएस में कमा चुका होता हूँ मैं गोल्ड बड़े में पैसे दे मैं बड़े टीके लवाए गोल्ड चो मैं ਉਹਦਾ ਖੋਲਦਾ ਨਹੀਂ ਚਾਰਟ ਇਧਰ ਜੂਸੀ ਇਧਰ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਖੋਲਿਆ ਹੋ ਸਿਰਫ ਐਮਐਨ ਕੀ ਲੱਗਾ ਬਸ ਗੱਲ No, no, for the longest time in the historical, gold did move smooth, right? No problem. Like last 10 years. Problem, I think, happened when this Israel-Iran started now, and people are panicking in a different sense, right? So, See, once it got its own trend, it would give you big swings. अब क्या हो रहा है? टाइम है वो एक ही उसके अंदर एकदम से नीचे चली जाती है, एकदम से ऊपर आ जाती है। वो स्विंग नहीं देगी। ਪਰ 골ਡ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆ ਉਹ ਵੋਲੀਅਮ ਇੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਚ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਜਾਣਾ गोल्ड ना पेशेंस चेक करता है जिस दिन उसकी स्विंग आएगी ना फिर ਉਹਦੀ ਡਾਊਨ ਵੀ ਬੜੀ ਗੰਦੀ ਹੈ ਤੇ गोल्ड में मैंने शॉर्ट में जितने पैसे कमाए हैं ना, वो S&P में नहीं कमाए हैं। गोल्ड के शॉर्ट में ਨਹੀਂ ਸ਼ੋਰ ਤੇ ਬਾਈ ਕਰੀ ਜਾਂਦੀ ऐसे ही मैं उस दिन यहाँ बैठा हुआ था, 20 सेकंड में $680 कमाए थे। ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੈਂ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿਤਨੇ okay, yeah, I'm out of this stupid trade. 650. See, this swing, I like it. आई है ना बड़ी स्विंग आई है, कुछ मूव हुआ है यार, कुछ करेंगे कुछ बाय करें, कुछ तो look at triple diversion on ES, and you know how bad that chart looks near midband. So let's see. Let it make its आप प्रॉफिट में हो गए होंगे अब? हाँ, गुड. Okay, advice for next time. मैं advice बता. If the trend is green, buy. Buy in ES. Buy from midband. Okay, so number one. When the area is coming, then you go against the trend. So when you entered at 76, I asked you why that number, right? So, but the area number was 87, right? I know it returned from 83, but before 87, you don't touch against the trend. So if you every morning he says you feel like the market is too overbought, it may not be overbought for some other people. They're still pushing it up. So unless these numbers hit, you stay away from the mouse. And if you, so that's my recommendation, right? So कोई फंसा तो नहीं हुआ किसी ट्रेड में? मैं तो FTT से बहस कर रहा हूँ, मैं तो डिले, आ गया सर आपका प्राइस मैं तो निकल गया ना 650 पे, तो प्रॉफिट लेके निकल गया. See, this is called moving. Like वो जब 70, 670, 666, this is where the temptation is, because you think it's going to go to 760, I should buy, and they drop the market. You think, so that's what, he asked me, you don't use mouse, right? For me, a mouse is not a, because when you have a mouse, you want to click. You want to click. प्लास्टिक का कीड़ा See, it took me in a trade for a long time, from 650 to like 700, but I'm like, I'm calm, I have threshold, it's okay. बिकॉज़ यू हैव टू लर्न No, my plan is, where am I going to do that average next? 120 ले वाली स्लिप 200 नहीं हो गए Sir, again, लेजेंड में मैं तो जॉब पूछता हूँ ना, मेरा अगला आंसर ही नहीं देते वो कहते हैं कि आगे स्विंग I don't 100 ले लिए 120 ले लिए 200 नहीं हो गए लेजेंड बहुत आप so went down to 630 again and bounced back up. पांच माइक्रो के मिनी कितने हो गए एक पॉइंट पे पॉइंट डालना 20 पॉइंट चलेगी ऊपर सीधी 100 आ गया. So with Nasdaq, guys, either stick to micros or there you go, it's coming down again, 630. एटीएम चला रहे हैं सर ATM हॉरिबली फेल हुई है. रीज़न ये है कि जब मार्केट स्मूथ है ना, बहुत अच्छी चली, हायर हाई लोअर हाई. ड्यूरिंग द डे, जिस तरह अभी पिछले आधा घंटे में हुआ, अप डाउन अप डाउन अप डाउन, वहाँ सारे स्टॉप लॉसेस हिट होते हैं. सो कंसोलिडेशन का मैं बैक एंड फोर्थ पूछा है,
what is the term consolidation in NASDAQ? Is generally 14 to 30, anywhere from 10 to 15 points. जब इस तरह काम शुरू हो जाए ना, यहाँ आपका स्टॉप लॉस हिट होगा. So it's great. ATM is great. Like, so I have two guys who are testing crude oil and gold to see if it actually breaks. Since you follow gold more, does it break previous high and continue or no? Generally higher high follow करती है तो स्मूथ चलते हैं. तो चलें गोल्ड पे चला लेंगे. नो प्रॉब्लम. हमने तो पैसे बनाने हैं, जहाँ मर्जी से बने. टेस्ट कर लीजिए. टेस्ट करेंगे. 15-10 पे टेस्ट करूँगा मैं. एक दिन ऐसा होता है. नहीं, वो तो हमारी ऑटोमेशन है ना. Idea is what we are trying to do is if it makes a higher high, next breakout we want to buy. If it makes a lower low, next breakout गोल्ड में करेगा. स्मूथ होना चाहिए. लाइक ये प्रीवियस ब्रेक तोड़े और प्रीवियस हाई तोड़े. आप करेंगे. तो मैं अभी ES पे टेस्ट कर. अब देखें, फॉर एग्जांपल ES राइट नाउ इज 5872. I want to see if it breaks 5872, I will enter a sell. For how many ticks? 8 ticks. I'm not after a long period of time. So, but issue again is $80 आ रहे हैं कौन सी वाला? ना, ये लेजेंड में 77 उधर जाना पड़ेगा. राइट लेजेंड में 97 हो गए. ਲੈਟਰ ਨਾਲ ਕਰਾਂ ਇਹਦੇ ਚ ਸੀ राइट क्लिक करके ਇਹਨੂੰ ਕਰਨਾ ਕੋਲ फिर चढ़ गई जी वापस. Like look, these swings are massive. ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਸ਼ਨ ਜੀ पोजीशन ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਚ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਕਿੱਥੇ ਹਾਂ ਉਹ ਇਧਰ $190 ਬਣ ਗਏ. ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਕਿੱਥੇ ਆ ਪਰ ਇਧਰ ਦੇਖੇ इधर 220 हो गए. नहीं पोजीशन नहीं नहीं राइट क्लिक नहीं अंदर इधर इसके अंदर फ्लैटन एवरीथिंग. चलो 242 बना दिए. It's okay. ठीक है ठीक है. It's okay. मैं देखो 450 ना बन गया उधर. Look at the swings. My God, back up to crazy. यही वेट कर रहा था सर कब की. एक बार थोड़ा 20-30 पॉइंट गिरे और देखूं कहाँ पे यार कुछ पैसा कितना बना हुआ है. वो तो सारा कुछ गायब हो गया. अकाउंट ही काम बंद. से जाओगे अच्छा अकाउंट की जमा नीचे 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 सर 448 बन गए हैं. नहीं ठीक है. कमीशन 479 की थी 448 बन गए. 450 से कम ही बनाने हैं. नहीं ठीक है. आपका सही बना है. I'm still waiting for them to give me a reply so people can start. Problem for me is I'm testing another company like FTT called Tradeify. Right? I have 7 accounts. तो उसमें कोई डील मंगाओ ना कोई. नहीं डील है $400 की है. वही 7500 सब कुछ वही है FTT. सस्ते में थोड़ा दिलो. देखिए तो प्राइस ज़्यादा है ना. बहुत प्राइस ज़्यादा है. मैं अकाउंट टेस्ट कर रहा हूँ कि पे भी करते हैं कि नहीं. पहले मुझे पे आउट मिलेगा तो आपको देंगे ना. ऐसी चाहिए ना $100 मिनिमम बनाना. इसमें 100 मिनिमम अब 4 ट्रेडर भी ऑफ करते हैं. बस इसका काम खत्म हो गया. लिया या ट्रेड नहीं सर एफटीटी का हुआ आपका? नहीं सारे अकाउंट ही नहीं चल रहे. नथिंग. बड़े जयबाजी नहीं अप्लाई 50 किया रुपए. सर लास्ट थर्सडे से मैं टिकट के तो they gave me one insane reason that my accounts which on October 14 at 4:15 they were open, so it's called liquidate. They auto liquidate, but no all of them. So they were all liquidated, but that's fine. I understand you liquidate, but you don't. They give you 3 warnings. Warning 1, 2, 3. On first warning they blocked it. So सर सर 4.5 उनको लगा आप ले जाओगे ज़्यादा. यार मैं नहीं हूँ. मैंने कहा हमारे ग्रुप में इतने ज़्यादा लड़के हैं, किसी को भी पैसे नहीं मिल रहे. छोटे मिल रहे हैं, मज़े की बात है. सर ले लो So we came up with a plan. We're not going to apply for 30,000, 3,000, 2,000, 5,000 rather than so. और वो ओपन करे तभी. Are they paying? ये तो लास्ट doing the अकाउंट है. payout? They are paying out, but they're not giving bulk payouts like 60 grand, 50, what they used to do. लेना बस ये लास्ट अकाउंट है एफटीटी का. मैंने और नहीं लेना है. मैं ऐसा नहीं दे रहा. नहीं आपको दे देंगे. दे देंगे गारंटी नहीं. नहीं आप पहुंचो तो सही वहाँ पर. जब तो जो छोटा
इससे अच्छा लेजेंड ले लूं, छोटे छोटे 1500 बना के 1500 बन जाते हैं 1500 नहीं बनाने ना वो यार 2350 का नहीं नहीं नहीं, लेजेंड्स में EA PA पे आउट, लेजेंड्स में और एफटीटी में FTT में डायरेक्ट FTT नाउ यू हैव टू मेक $2700 और देखो उधर 7500 बनाना है, इतने ਤੁਸੀਂ 3000 बनाना तो 1500 ले लेना क्यों जी, दिन होने ही लगने लेजेंड क्यों सर, ये भी बात है ना। यस थोड़े पैसे में मिल रहा है तो थोड़े में लेके लेजेंड मैं बेस्ट मानता हूँ। एफटीटी तो है ही है, लेजेंड बेस्ट है सब। लेजेंड में पैसा देखो 1500 एक दिन में वो आ गया, उस दिन ले गया, क्योंकि उस दिन न्यूज़ ही इतना बड़ा है अभी वो नीचे, वो तो जाना ही था $50 गए। अब उसके बाद लिया 1500 फिर बना दिया था $1300, फिर वो नीचे गिर गया तो फिर मेरा मन थोड़ा उड़ गया मन भी उड़ गया तो फिर अकाउंट भी उड़ गया। तो ये FTMO का डेमो सेटअप कर देना जी। नहीं नहीं, आप तो जब साइन अप कर लें that's it. हाँ, उन्हें डाउनलोड करे ऑप्शन आई ना, आप फ़ोन पे डाउनलोड करें फोन पे नहीं, मैं उधर के कंप्यूटर पे अच्छा मैं करवा देता, मैं भी करवा देता, नो नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। पर वो कमीशन है ना, वो तो कमीशन लगी है ना पर ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮਸਲਾ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਵੀ ਦੇਖ ਲਈਏ माइंड ਦੇ। नो नो नहीं नहीं, आप ट्रेडोवेट की वेबसाइट पे जाके क्लिक कर लें, एंड पे एंड रिजल्ट रियलाइज PNL मैटर्स, रियलाइज PNL सही बताएगा, वो ट्रू बताएगा, रियलाइज सही PNL। है, आज का इतना ही बनाना है। या इसका 30% और हाथ लगे हुए हैं ना सर, इधर इतना हो भी गया 30% कितना फर्क पड़ेगा? हाँ हाँ सर, $50 बन जाएगा। और हाँ, उनका उन्होंने तो एक दिन में 1100 900 कर लिया था ना। नहीं, मान लो 480 डिवाइडेड बाय 30%, मल्टीप्लाई वो बनता है 1590। 90 16 को बन जाएगा। हाँ, 100 का फर्क पड़ेगा। 100 ही बड़ा एक्स्ट्रा बनाना पड़ेगा, कोई फर्क नहीं। I know a lot of people who have passed the first Legends, but their website is still saying monthly fee. I spoke to Greg so many times, and he's like, no, because right now Legends is a monthly, and based on our request, they made it on a one time. So I'm waiting for Greg to update the website so we can actually start buying the owner of Legend. Actually, he's the owner of GFF, like the true CEO. And because everybody was leaving live accounts and going on, so he started to open a firm, and I warned him, yeah, you're gonna go bankrupt, buddy, because remember everybody will get 20. हाँ, मैंने उसको कह दिया था कि make sure you have enough money for our guys, because if they do discipline, EA PA payout, that 2,000 investment, 30,000 payout, just सर ऐसा नहीं है, मेरे को जहाँ तक मैंने थोड़ा सा research हाँ जी, कि ये जो हम ट्रेड करते हैं फंडेड में, हाँ, जो अच्छे ट्रेडर हैं जैसे आप, 90 days के बाद। हाँ नहीं नहीं, मैं कुछ छोड़ दूँ, वो सर कहते इनका कंप्यूटर पे प्रोग्रामिंग बनाई हाँ। है उनको, तो वो Oh yeah, not right away, not right away. Because for anybody to bet somebody that I'm a good trader, I may be a good teacher, but may be a horrible trader. You have to understand. I have yet to see a person like with so much patience, right? मैं आज भी फंस जाता हूँ और एवरेज करके निकलना पड़ता है, क्यों? मार्केट खींच लेती है, राइट? तो इमोशंस है ना, तो अब हम कितने बैठेंगे 760 तक? Now he said yesterday, true to the 600-700 point, and he made his money. Now today we are waiting 500 or 760. मैं वेट कर रहा था आधे घंटे, नीचे मेरा 100 FTMO में बना दिया। So waiting is that. So what happens is they all funded companies, they make money three ways. First is they will EA and PA, they want you to fail. That's the inherent business model. Come, give me $50, I give you some, but you will fail, I get free money.
So that's thousands of people, imagine giving $50. So number two, they want you to fail PA. So that's why the restrictions are there. 10 days, 30%. So you're like, all right, okay, no problem. But the second way they make money is they sell your data. Not your information, your trade data. Meaning how are you doing? So it's called let's say you have 1,000 traders. Whether they're winning or losing, you can get precise analysis. It's called the data analysis. How are they buying? How are they selling? Which market? So they can, they have big amount of data coming. After emails and everything. So after 90 days, if Greg sees that, you know what, Vikramji is precise, so he will say, all right, you keep trading. I will link your account with me automatically, right? And I wish they had. इतनी जंक में ईमेल आई पड़ी है आई जाती है trading. Hedge fund managers, Oh, when. they do a big wave through. Now, Scott on his live, the FTT guy, on his live, where he says, imagine you have he has 20,000 people. Let's pick a number. If everybody gave him $200, that's $4 million, right? Or $4 million bucks. Yeah. Now he has this free capital. He can trade every day and then give you the payout. It's like, so. Yes, as long as because there is a word in trading, very critical word, it's called customer segregated funds. Okay, when you pay to GFF, they're not allowed to legally touch your money because they can't trade on that because it's called customer segregated funds. That's your money. What Scott from FTT can do is, he give you this video game to play rhythmic and everything, but now he has so much money up front, right? And two companies do this, Tim Hortons and Starbucks. When you buy their gift card, let's say you buy a $20 gift card, you're not going to use $20 right away, but look how much capital they got for free, interest-free capital. So they want to push you that card. That $50 card or gift card makes the most amount of money for any company because now all of this capital, sometime you lose that Tim Horton card. You don't even use it for a year. I have given, some people gave me, I checked but that capital is sitting in Tim Horton's pool, but imagine how much money they can use to generate more. So that's what Scott did. Let's say we have 100 people, everybody gave them $1,000, right? That's $100,000 free. He can use it to trade. He can do it for whatever. So, but GFF is not allowed to touch your funds. If you guys heard a company called FTX, the crypto FTX, Sandman, big scandal. Sandman, right? Altman, Freeman, What he did was you gave him money to buy crypto. On your dashboard, you were seeing the real money. Yes. But he took all that money and then he traded and he lost. He's in jail for 28 years now, 30 years. Because, brokers, that's why the only two brokers that we know of, AMP and GFF, use customer segregated funds. It's like a bank account. They're not allowed to touch it, right? So, but every other company uses your money, which is okay. But Maybe next year funded companies, they have a regulation also. Sorry, who? This funded company. No regulation. That's the best part. Next year. So That's why FTMO is based out of Turkey and Cyprus or a different country, right? So there is a lot of money to be involved. I always wanted to open a funded account, but it goes against me, meaning that if I open a funded account, I will want you to fail, right? I want you but ji jo marzi kar lo, mujhe nahi pata, right? So either I'd go into teaching you how to win or how to fail, right? So ethically funded accounts are designed, but it's a great opportunity, great. $1,500, $50, $300, $7,500. Idea is,
if you cannot manage this money in a funded account, I don't think you will do this in real life. That's my belief, right? That's just the way I am. If you are not able to show consistently with this, okay, so I have a guy, honestly, he spent 1 year with me, right? So I push him through Apex and then FTT. After FTT, you know what he did? He opened up a real GFF account. Real, right? You know how much money he put in? 7,500. Okay? Real money. Every day I said, train your brain. When you make 375 to 600, end of the day withdraw. So every day you only have 7,500, just like FTT. There's no difference. Whatever money you make, just withdraw. Just whatever money you make, you withdraw. So each day you come in, so your mind with FTT is now so much trained to trade like normally, right? तो ये जो आपको मैं अजियत दे रहा हूँ ना funded account की, meaning कि brutality is to train your brain, nothing to do with, yes, you get lucky because idea is 1500, 150, जिस तरह उन्होंने आज बना लिया 450, उन्होंने बना लिए, FTMO पास हो जाए, आपका माइंड इतना पक्का हो जाएगा मनी मैनेजमेंट में कि अपने पैसे को भी उसी तरह ध्यान से रखेगा कि यार नहीं, it's okay, so because the moment you now can get a payout on FTT 1 or 2, take that money, put it in GFF, manage it same way, slowly, because now you will do the same things as a real person. All right, आगे जी 622 again. Let's get ready for. No, I'm not buying, man. I'm just getting ready, getting excited. Because there is a bit of a market movement. Oh, मुझे तो लगता है बहन भाइयाँ जिस तरह वो सुबह कह रहे थे, it works this way, it works. हाँ. कौन सा लगा? कौन से अकाउंट? नहीं ये तो लेजेंड्स हैं इधर, वो तो चलता ही नहीं है, वो बैठे हैं साथ आपके, नहीं लेजेंड्स 450 जस्ट लाइक एपेक्स है, कुछ नहीं करना लेजेंड्स के लिए, नहीं वो FTT के लिए सीखना है मुझे, एनी डस्ट है मैं सेट करूँ आपका, आपने नहीं बाय किया था वाइस से, आपने सिर्फ लेजेंड लिया था, वो FTT ओके असल में होता ही है कि आपके ना बीच में चैप्टर मिसिंग हो जाते हैं, आप आते हो, माय ब्रदर यू नो ही स्लीप्स अ लॉट एंड आई एम लाइक हेवन में जाएंगे या हेल में, जब आपका हिसाब हो रहा होगा ना, गॉड भी कहेगा वो स्लीपिंग लाइक मैं क्या हिसाब करूं यार तुम्हारा, तुम हर वक्त तो सोए होते हो, तो मैंने कहा यार जी, क्योंकि वो जहाँ जाता सो जाता है, मैंने कहा यार ऊपर वाले दिन ना वो भी कंफ्यूज होंगे, तुम्हारी आधी जिंदगी तो सो के गुजरी है यार क्या, तो मैं ये आपको मजाक नहीं उड़ा रहा, मैं कह रहा हूँ उस दिन आप आए, सेट किया, आप 8 दिन बाद आए हो, तो सोए गए ना पीछे, पूरे 8 दिन बाद आए, अब आपको भूल गए कि लेजेंड्स क्या था, FTT क्या था, सोने का टाइम नहीं, मजाक कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि आपने खोल के भी नहीं, हाँ इतना सिर्फ खोल के देख लिया गए, नो प्रॉब्लम, क्या है जी प्राइस 600 and we're back to 543. We still 100 points away. सर 500 से नीचे पहले नहीं, क्योंकि उन्होंने 500 का नाम, हाँ नहीं मैं 500 से पहले. No, I listened to him. No, because I paid attention. He said stay high to go low, number one. Then second thing, he's like it could go to expected low today, right? So when it was falling, I was looking at the number 500. Because look at the strike price today. It's 525. So 525 should make a good support coming from 780, right? So let's see. And again, we have earnings at that time and हाँ जी सर, तो 525 500 का भी वेट करना है. वो फिर लगता है शाम को जो रिजल्ट्स होंगे ना, अभी जिस तरह इन्होंने बात की शायद रिजल्ट्स अच्छे हैं. अच्छे आएंगे सर, माइक्रोसॉफ्ट के तो अच्छे आएंगे बहुत.
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI की वजह से ना उसका गिरा तो रहे हैं, देखें, pressure down. But that candle that happened back to 700, that was a bit scary. You know, that was like, man, you go from R1 to S2 to R1. That's उसमें मेरे को एवरेज करनी पड़ी। नहीं मुझे भी यही, I'm not in any trade at all whatsoever, but I was on that trade on 650 and नहीं neither I have not neither because here's the problem with me looking at it, do I buy or do I sell? Yes, if you are an ES person, you can go from mid-band to sell mid-band, but for NASDAQ, what do I do? Nothing. and you only do this Because it's fast, right? Like I'm up $700 each, sorry, 1,000 on my Tradeify, right? लेस करना है अभी। नहीं मैंने अब खींचना, मैंने कहा यार देखो प्रॉब्लम ये है कि मैंने 75 पे तो बेचना है ना, उसके मैंने कहा 1000 डे डालें यार, कोई बात नहीं 1000। अब मुझे ये नहीं मालूम कि हाउ मच मनी, हाउ विल दे पे मी, बिकॉज if I'm making 1,000 divided by 20%, that would make, I need to make 5,000. But I already have to make 7,500 before I get qualified for a payout. So how does this work? सर मैंने जो देखा ना कि वो मैंने जब भी पे आउट लेना जहाँ तक मेरे को उन्होंने हाँ। info भी दिया है कि 7,500 आपका जैसे 300,000 का ठीक है। आपका जो क्या नाम है Payout। पे आउट जो आपके परसेंटेज है हाँ। 20% से ज़्यादा टोटल प्रॉफिट्स का नहीं होना चाहिए एनी डे। अगर वो होगा तो वो मान लो किसी ने 10,000 बना दिया हाँ, तो 10,000 का वो $2,000 से ज़्यादा एक दिन का प्रॉफिट नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर हो गया, अगर हो गया तो वो फिर उसको मेकअप करना पड़ेगा, वही चीज़। देन यू गेट द 3,000। उन्होंने एग्जांपल दी है सर FTT की साइड पे। okay. No, but let's because I have this real problem with Tradeify. I made $2,200 yesterday, single shot, right? It's okay. I was just playing and market was moving. How much money I have to make now? उसका 20% करके नहीं, मेरा जो क्वेश्चन ये था ना, जो मैं अभी तक, क्योंकि Tradeify is a new company, right? Okay, so let's go to FTT. FTT says you have $7,500 target and we will pay you $3,000. Okay. 20% is $600 maximum. So when you get to 7,500, they should pay you, right? And they will check, you will not make more than 600. So this is a check. No problem. तो ये 20% उसका देखते हैं 20% of this? टोटल प्रॉफिट्स का। No, okay. Only then they give 3,000 20% of total profits, total profit। not the payout? Okay. So let's say if I make $10,000. So 20% of this, 10,000? 2,000। Okay. So if you make in any day 2,200, then Yes. वो increase कर देते हैं। यही लेजेंड में भी यही प्रॉब्लम हो रही है। इसीलिए मैं कहता हूँ रहें 600 से नीचे ना। हाँ, वो तो नॉर्मल रूल सेट कर दे। हाँ, वो पे आउट। लेकिन अब बंदे ने बना लिए, 1000 बना लिए, तो उसको कैसे पकड़ना है? जैसे 7500 है तो 1500 से ज़्यादा नहीं भी बनाएगा, then he is within the limit। 20% I always think it's 20% of 3,000. अच्छा. Because in the last historical 20 days, I made no more than 600. And I said, plan के साथ. 634. Let's see. Back up again. What do I do? क्या करें, सेल्फ नहीं लगाने का। Sir, maybe I'm wrong. I'm just No. I see. The thing is, my target right now is 7,500 on Tradeify.
When I get there, I will find out how much, what do they say. बिकॉज इसका तो मैंने एग्जांपल भी दिया नॉलेज बेस FTT में या बिकॉज एट द टाइम ऑफ पे आउट इट शुड नॉट बी 20% on any single day of total profit, not of payout. 20% बिना हो गया Huh? 20% 1500. So that's why there is a 5-day payout and 10 days payout. If you want 5 days, to 1500 times 5, 7500. If you want 10 days payout, you make 750. तो वर्किंग डे कितने गया ना 10 days payout, 5 days payout. अपने 5 days में सर करके उसमें 2 payout है ना FTT में. ये दो तो 7500 का अगर आप 20% निकालें तो 1500 आता है. क्या? 1500 आएगा तो 1500 टाइम्स 5 अगर आपने 5 डे का लेना, अगर 10 डेज का लेना तो 750. 750. आपका बिजनेस प्लान 600 600 का या 500 का वो अप टू यू. 600 10 days से ऊपर हो गया ना 12 दिन हो गए 600 तो 1500 से नीचे होगा ना. 600 के हिसाब से जाएंगे तो आपको कितने दिन लगते हैं? 10 दिन में हो गया 600 6 6 12 चीट 12 दिन से भी 13 दिन हो गए 13 चीट तो हाँ 13 दिन बाद दूंगी अप्लाई करो वो महीने में 2 पे आउट लेगा. It's just my opinion. Maybe I'm wrong 100%. वो सारा रेट जो बना के भेज जाएंगे ना फिर तो सब मैं जो स्टडी की था मैंने बताया. मैं तो स्टडी किया ना लेजेंड ਦੇ 5 ਅਕਾਊਂਟ ਲਵੋ ਸਕੋਪੀਓ ਲਓ 250 ਦੇ ਪੈਣੇ ਠੀਕ ਆ ਰੋਜ਼ ਦਾ 200 ਬਣਾਵੇ ਇਕੱਠੇ ਪੈਸੇ 1500 ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ नहीं जो रफे जी का प्लान है ना वो बिल्कुल सही है. 600 इज ए बिग अमाउंट ऑल्सो एवरी डे. 100 भी कमाऊंगा नहीं हाँ $600 every day is a big amount. That is what discipline they have to observe. As per rule, you can make 20% of total profit at that time of submission. जो हमको लेकिन से यही पंगा हुआ है. ये लॉगिन करो देखो यार हेलो login का पासवर्ड अगेन फ्रॉम देयर yeah that's what they're saying. Legend Tradeify has a lot of fees too. That's crazy. नहीं you have to change it to ये क्या था सर जी सर, जी भजन. यूजर नेम पासवर्ड डाल दिए व्हाट डू वी नीड टू चेंज इट टू नीचे फास्ट ट्रैक ट्रेडिंग पंडित फीचर नेटवर्क सबसे नीचे. जी सर. How did you come up with this $600 number? Because I thought it was 20% off your profit goal, right? This is the profit goal. Yes, That yes, is yes. 7,500, right? But if you look at the payout is 3,000, Right. right? So I'm looking at 20% of payout. This is exactly 30 seconds ago we were talking about this. Alright. Is it 20% of your profit target or if it's 20% of your payout? I look at always 20% of your, but if you look at Apex email, right? They're gonna pay you out 1,500, right? So 30% of 1,500 is 450, Right. right? If they're gonna pay you 3,000, 30% of, they actually wrote in the email, don't exceed that value. So we're So I'm going 600 on Just to that. be on the safe side. Yeah, just to be like, right. not getting denied. के साथ तो वो उनको दुआ करें वहाँ पहुँच के पे मिल जाए. मुझे सिर्फ, मैं जो FTT में सिर्फ ये घबराहट है, 600 हो या 6,000 हो, पेमेंट आ जाए. मिल जाए. सर ये Tradify हाँ जी. हाँ एनी डेस्क ਅਕਾਊਂਟ ਮਹਿੰਗਾ ਉਹਦਾ 3700 ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਲਾਸ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਨਹੀਂ वो ड्रा डाउन. ਡਰਾ ਡਾਊਨ ਉਹਦਾ $3700 ਬਾਕੀ Tradify is an old group also. Tradeify is another company. Like I put, पे कर रही है वो अभी पहले राउंड में हैं हम, 3 लड़के हम पहले टेस्ट कर रहे हैं. लेजेंड में आपको
कितना हो गया है, हो गया दूसरे को नहीं राउंड टू नहीं, मैंने बहुत ज़्यादा बनाए हुए हैं, पहले ही दफ़ा 900 बन गए थे। अब फिर मेरा मूड ही ऑफ हो गया जब उसने कहा ना कि यार ये, हालांकि 20 अकाउंट हैं, सब में 20 में 900 बना हुआ है। पहले ही दिन तो मैंने क्या छोड़ दो यार आज का, क्योंकि अब टारगेट बहुत बड़ा कर दिया ना। So now 900 divided by 30%, now I have to make 3,000 instead of 1,500, right? That's the problem. रिस्क लेना पड़ेगा बिजनेस में बड़ा। हाँ, या रिस्क लेके एक्सपायरी से पहले तो थ्रेशोल्ड कम है। नहीं थ्रेशोल्ड पूरा है, लेकिन फिर फेंक देंगे ना। So, the problem with these funded companies, you cannot make more. That's the another ज़्यादा headache. दिन ट्रेड करो, एक दिन बैड आएगा तो उस दिन सारा दे जाओगे आप। कंसिस्टेंसी में फंसता है ना, कंसिस्टेंसी इज द Only good thing about this is FTMO does not have a consistency rule. सर उसमें हेजिंग वगैरह हो जाती है, बिल्कुल हो जाती, हर कुछ हो जाता है। क्योंकि मैंने करी ना, मैंने कहा यार ये बनता ही जा रहा है, बनता ही जा रहा ना हैजिंग कर दो, है। करी सेल लगा दो, बाय लगा दो, उल्टा करके छोड़ दो। कर सकते हैं। हाँ हैजिंग करो, वो एक्चुअली वो ट्रेड उल्टी चलेगी तो वेट करो। सीएफडी है ना। मैं पता है कितना करदा डे दी, जे मेरी थल्ले 5 दी ट्रेड लगी है ना सेल दी, ऊपर जाई जा रहा और तो 10 दी बाय लेना, हैज होगी 5 दी, प्रॉफिट भी लेना ऊपर, फिर जब ऊपर टोटल प्रॉफिट गया तो बाय कर लो, सेल छोड़ देनी, तो थल्ले दी एवरेज है किसी तरह तो जाएगा। नहीं ऊपर ही जाता, आज ऊपर ही जाइए ना, फिर मैं हैज प्लस नहीं करनी कि मैंने प्रॉफिट भी दवे ट्रेड, जी सर, नंबर दें। प्रॉफिट लेके ऊपर जो पैसे भी 762 सेल आदमी It's yeah, except look at back to 660 again. Wow. ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੋਲ ਲੈ ਲਓ, ਉਹ ਥੋੜਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਵੀ ਹੋਊਗਾ। ਉਹ ਕਈ ਸਵਿੰਗ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਲੈ ਲਿਆ, ਸੈਲ ਲਗਾ ਕੇ ਉਹ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਇਹਦੇ ਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ 600-700 के बीच में झूला चला गया। ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਦੇਣਾ ਟ੍ਰੇਡ 10 ਤੋਂ 600 हो गया। ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਾਈ 'ਚ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਲੌਂਗ 'ਚ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਥੱਲੇ ਬੜੀ ਡੇਗੀ ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਚੱਲ ਇੱਥੇ Look, 35-point swing plus another 40-point swing. ਦੇਖੋ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ, ਉਹ ਫੇਰ ਲੈ ਗਏ ਇਹਦੇ ਸਾਰੇ 100 ਵਾਲੀ ਕਰਕੇ ਬੈਠਣ ਲੱਗੇ ਲਾ ਕੇ। His trader weight, his rhythmic is old, so I got to update it. Oh man, 40 point swing back to, except yes करें और फिर yes करें, yes. $42 swing. Incredible. 65 पे साल में 65 पे? अभी किया आना प्रॉपर्टी $2 आएगा नीचे 50 तक हो जाएगा। Oh, 629, 5, 20,000, 6, 7. मेरे हिसाब से तो सेल खेलो इतना 2-3 दिन, मार्केट प्लस ही रहनी है। ये सेल खेले, एरिया पे खेले. Look, 51 points, 680. Wow, back up. 99.100%। चलो अब जाके ये और फेंक देते हैं, अब जाके बाकी
नीचे रिजेक्शन देखना पड़ेगा, सर ऊपर जाएगी नीचे जाएगी, फिर दोबारा मिड बैंक टच करके यहाँ अपना पासवर्ड डाल दें और नीचे फिर अगेन कर दें. 55 point swing, amazing. 22,000 contracts. अभी आए I mean in the like 20 MNQ में MNQ. ट्रेडिंग ले गया एक तो ट्रेड वन से दूसरी कर सकते हैं वाइट में No, this is called overbought. हाँ 100% 6 minutes. लेकिन इस टाइम सेल बंदा हूँ सर पहले मिड बैंड टेस्ट कर लेने दें, फिर वापस ऊपर जाती है तो फिर वहाँ से सेल आ गया सर हो गया. लेकिन 45 तो ले पहले 5 से तो आए आपने अभी तक एग्रीमेंट ही नहीं साइन किया, आज पहला दिन लगता. यस 3 दिन बाद बना दो भाई, ये एक्टिव हुआ मेरा अकाउंट. 8 में से 3 माइनस कर. Okay, so these are your positions. So this is positions window as per the video. This is your order book, meaning this is where you will trade. So let's say mes.cme. ये है number 1. Now dashboard, this tells you everything about your account right here. Next is your order book. Oh, sorry, not order book. So again pushes back up. ले जाएंगे लगता है Yeah. अब यहाँ बनता था सेल आपका, प्रीवियस हाई ने ब्रेक किया, 5 पॉइंट ले लेते. ओवरबॉट हुई, नीचे आई, वापस उसने ब्रेक किया, एंड देन लुक कितनी तेज. ब्रेक एक्स्ट्रा नहीं किया है नहीं नहीं 85 पे गई ना. मैं नैस्डैक देख रहा हूँ. प्रीवियस हाई वाज 683, न्यू हाई वाज 685. तो दोबारा हाई बनाएंगी फिर जाना है. लो सर आपका अकाउंट सारा सेट है. एंड लेट मी सेव दी सेटिंग्स नेक्स्ट टाइम. तो आपने चार्ट्स देखने हैं उधर और ट्रेड इस बुक ये आपकी डाउन में करना. या सो योर रूल्स आर कैन नॉट गो लोअर देन 1250. नंबर 2 हैव टू मेक 2750 टू गेट 1500. सो 1250 आपका थ्रेशोल्ड है. No problem, all done. Now you can hibernate 8 more days. अच्छा, इसकी कोई एक्सपायरी थोड़ी है. में काम करना है तो 5 से सर नहीं है 5 से 50 में बन जाते हैं आराम से. नीचे भी कहीं भी कहीं तो टर्मिनल चलाना दूसरा कैसे सर आपका गोल्ड निकल गया, गोल्ड बाय चला गया. मैं गोल्ड डेमो का हो जाएगा 14 रन का. मेरा सर्किट दूसरा का डेमो का कितना चाहिए? फ्री
फुटने का कर ही डेमो 200 तो मैंने लिया उसको उनको लगा होगा ये होगा शायद बड़ी कंपनी है उनका वो डेमो दी उसके आगे आपको डेमो समझ में कन्वर्ट हो गया ट्रेडर ले लिए कितनी बड़ी स्विंग आई जी 34 पॉइंट फ्रॉम प्रीवियस हाई। वो वाह, अब ले लो लेके छोड़ दो सैलरी का है तो हो जाएगी। से ज़्यादा नहीं होना नीचे का बनाया हुआ जय जय ट्राई कर रहे 543। ट्रेड लगी आ गई आ गई आ गई आ गई चलेगी अब ऊपर ले गई हो जाएगी चढ़ने दें चढ़ने दें। ले लिए सर Again, swing down, wait for mid-band, swing down, then up. अभी और ऊपर जा रही है देखो अभी और ऊपर जाएंगे
800 करा दे सर आज। अर्निंग्स फिर तो ऊपर जाएगी 500 से, फिर 700 पे जब 500 आज चलेगी। अर्निंग प्लस है सर आज इसकी माइक्रो मार्केट बहुत हिलाएगी। नहीं हलाएंगे। तब चलेगी देखो और ऊपर जाएगी और ऊपर ये काट के निकल भी गया और घबरा के निकलेगी। नैस्डैक में तो आपको अभी आप दूर ही रहे, न्यू ट्रेडर ने। नहीं नैस्डैक लिया वो चला रहे थे ना सामने। अच्छा। तो 2-2.5 लॉस में थी। एमएन की भी ठीक है। हैं सर ऑटो कल तो कंसोलिडेशन में फिर प्रॉब्लम कंसोलिडेशन है कि मैनुअल तो अगर स्मूथ है तो आप एरिया करते रहो, लाइफ में जीतते रहोगे। Okay, so we have 2 live examples right now. Look at the market got overbought heavily right now. This is the midband. It tested midband. It was 283. I said wait for 285 and then you short. Overbought, midband, again break previous high, short. नहीं देखिए प्रॉब्लम ये था कि 99.9 इधर हो गया, अभी भी वो रेज हो रही है। मिस द फर्स्ट स्विंग, लेट इट गो एज फार, टच मिड बैंड, लेट इट ब्रेक दिस, देन यू आर सेफर। ब्रेक होंगे तो फिर आप सेल करेंगे ना। स्विंग बहुत बड़ी आई ना, बहुत बड़ी स्विंग में आप इसको वेट कर लो। अब देखिए इतनी बड़ी स्विंग नीचे आई, राइट, उसको आप वेट कर लो जितना मर्जी आ जाए। मिड बैंड, wait for it and then let it, whatever that number is, let it break and then you go long. Look, we have this happening over and over and over right now. सेकंड टाइम पे सर आरएसआई देखना नहीं, second time पे RSI नहीं देखना। जस्ट प्रीवियस Yeah, you don't need to watch RSI. और अभी देखो उसमें 662 पे आया था, थोड़ा सा नीचे देके फिर 674 पे गया, उसके बाद सेल करना था। Yes, exactly. Just keep an eye on previous highs when it's a huge swing. थोड़ा भी सैड ही लग रहा है यार। अरोड़ा जी क्या दे रहा है? दिन चल रहे तो कल भी परसों ही अकाउंट हो गया। डरो नहीं पाया ऐसे तो 3 दिन है ना, लो हाई बस 2 चीज़ें बढ़नी है, वेट करनी है। जब पहला एंटर हो गए उन्होंने तो निकल जाएगा। हम देख लेकिन तो बनया हुआ लो गया हुआ तो बनया हुआ उन्होंने भी लो गया हुआ है करके नाली बना ली। जब लो गया तो पढ़ो, हाई गया तो पढ़ो, बस दो ही काम है। एरिया आज सवेरे नंबर तोड़ गया ना, लो वाला नंबर तोड़ गया, जरा 600 भी मिल गया, 700 भी तोड़ गया। छोटे बंदे का घबरा ये तो दूसरा ये तो देखता हूँ समझ आनी ट्रेनिंग होनी है वो तो भी क्लासा हो ਤੁਸੀਂ ਬਾਏ ਹੁਣ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਚਲ ਗਈ ਹੋ? 4 ਉੱਡ ਗਏ ਪਰ ਉੱਡਦੇ ਕਿਉਂ ਪਿਆ? ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਲੈਣ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਉਹ ਟ੍ਰੇਡ ਦਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਜਿਹੜੀ ਟ੍ਰੇਡ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਸ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਭੱਜ ਜਾਂਦੇ। ਹੁਣ ਤਾਂ 20-30-40 $40 ਦਿਖੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਭੱਜ ਗਏ, तो उसे ने फिर बैकअप करके सारे में पैसे दिते कोई वो नहीं लाया। एक स्टॉप लॉस रखना माइंड का भी, मैं कितना दे कितना 4 दाव देनिया देखो हले भी वो बाय ही जा रही है। सर एसमेंट पे घुसा रहा है। नहीं, मैं शॉर्ट में हूँ 5 माइक्रो से, पता कहाँ से? 656 से।
अभी जो हमारा टॉप का एस्टिमेट दिखा रहा है 670 वहीं पे बनेगा। हाँ, मैं उधर से शॉर्ट हूँ, 5 माइक्रो हैं। और अभी क्या अपडेट है मेरी, एक सेकेंड। लगता है सर आपको FTD देना है मुझे। My only my issue I see is that the commissions are huge in Tradeify. So I made 920, but it's showing 680. ये FTT में तो It's not FTT, Tradeify. 980 minus 920 minus 680, almost $240 in commissions. That is ridiculous. ਸਰ ਲੈਜੈਂਡ ਚ ਅੱਜ ਬੜੀ ਘੱਟ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਮੈਂ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਰੋਜ਼ $100 ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿੰਦਾ। ਅੱਜ नहीं 480 ਬਣੇ ਦੇ नहीं ट्रेड कट कीते ने ना, 5 ਦੀ ਲਾਈ तब ठीक है ना। नहीं लॉट किन्ने पाए? 5 ਸੀ ਮੈਨੂੰ 5 माइक्रो, ठीक है ना। तो कितना कमीशन दिया? 480 दिया है, नहीं। 480 माइनस 448 वही $30 दिया। $30, 30 डिवाइडेड बाय कितने ट्रेड किए? 5। 5 का 2-3 ट्रेंड दिए। तो $2 ले रहे हैं ना, $1.50 पर माइक्रो ले रहे हैं। आज कम दे रही है, रोज तो $100 बन जाता है, उधर 400 बनाता है, उधर 300 बनाता है, रेटा ज़्यादा लेना है। असली सारी ट्रेड प्लस से लेना है ਅੱਜ ਤੇ 1 2 3 ਪਹਿਲੀ ਦੇ 100 ਸੀ, ਦੂਜੀ ਦੇ 50 ਸੀ, ਤੀਜੀ ਦੇ ਫਿਰ 150 ਸੀ, 4 ਟਰੇਡ ਲਈਆਂ ਇਸ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ 3 ਵਾਲੀ 4 ਕਿੰਨੀਆਂ ਲਈਆਂ, ਮੈਂ 5 ਹੀ ਲਾਇਆ, 5 ਦਾ ਪੜਾ ਟ੍ਰੇਡ ਸਹੀ ਆਈ 500 ਦਾ। ਲੈਣ ਕਰੋ ਹੀ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਧਰ ਫਸ ਗਏ ਤਾਂ ਸਮਝ ਲਓ ਉੱਧਰੋਂ ਨਿਕਲਣਾ, ਉਹ ਖੁੱਲੇ ਹੀ ਹੋ ਗਏ ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਥੱਲੇ ਡੇਗੀ ਹੋਣੀ। और इसकी फीस कितनी है दूसरे अकाउंट की, लेजेंड की? ये 150 होनी चाहिए। सर कम होनी चाहिए। नहीं वो तो कह रहा था 85 मंथली दो। अब एक टाइम कर दिए। हाँ यही तो कह रहा हूँ मैं, 150 के। सही हो गया, 150 में आपका डाटा भी हाँ जी, बनेगा। सी यू इन 8 days। 150 में फीड भी बन गया, कल ही आ जाओ ना अकाउंट उड़ा अगर आपका। टेक केयर बॉस। Most traders I know, they will get out of a bad trade and then get stuck again in a bad trade. वो एक जगह स्टम्बल होते हैं, अगले फिर फंस जाते हैं। ओ भाई, यस आ गया 10 पॉइंट रह गया। लास्ट टाइम माइक्रोसॉफ्ट की जब आई थी तो ऊपर गई थी मार्केट, नीचे गई। मैं देखता हूँ। नहीं वो दोनों स्विंग तो दोनों ही ले गए, लेकिन मार्केट भी एक तरफ ले गए दोनों। let me see seeking alpha Microsoft earnings calendar. So what are we looking at today for Microsoft? They're expecting Meta gave 50% year over year. Wow. सर दिसंबर मार्च और जनवरी तीनों में प्लस ही आई है। लीड बाय जून की जो थी 2.95 आई थी, 2.94 एक्सपेक्टेड थी दिसंबर में। जून में 64.44 बिलियन। Last quarter was the best quarter for give me 1 second, for Meta. So let's see this quarter. मार्च चली बड़ी आई थी, मार्च में उन्होंने बहुत पैसा बनाया, मार्च की रिपोर्ट में। जून में थोड़ा कम। Again wants to go and test 700 over, you know. अब देखिए ऊपर जा रहे थे ना, तो मिड बैंड से बाय करना था। अगर रैंडम नहीं एंटर होना, अगर मिड बैंड से कलर चेंज होता तो निकल जाए, और मिड बैंड अगर चल रहा है तो 15-10 मिड बैंड। आज तो एक्सपेक्टेड ये 3.10 कर रहे हैं। ये इसकी अर्निंग्स नहीं एक सेकंड में पढ़ लूँ। 2.94 थी लास्ट की एक्सपेक्टेड, और 3.10 की कर रहे हैं एक्सपेक्टेड। वो छोड़ देते ट्रेड, वो 200 कवर हो जाना था, ये वो ऊपर ही ऊपर चली गई। इतना ਹੁੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਦੀ ਟ੍ਰੇਡ ਦੀ ਲਾਸਟ ਕੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ 50 ਤੇ ਵੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਚਲ ਰਹੀ ਹੈ 70 ਦੇਖ ਕੇ ਕੱਟ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ
15 पॉइंट ही है। नेशनल पे भी ईएस करो, ईएस करो ना, पूरी नेशनल पे लेगी होता गलती तो नहीं है ना, फिर पक्के बता वो भी फुल। माइक्रो भी कर माइक्रो फिर ठीक है। छोटे पैसे ना 50, 40, 50, $70 रेट कर लेता है, कोई बात नहीं। और जब बड़े में सीधा ही 75, 100 बन जाता है ना, तो कैसा काट दे। लेता क्यों बढ़ेगा? All right. 12 बजे जरा No, no, next, yeah, let's see. Next, ऐसा मूवमेंट आएगा पूरी। agree candle. माइक्रोसॉफ्ट के अपनी बैड आ गए ना, क्रैश कर दे 500 पॉइंट। कल फिर उठानी है इन्होंने। So भैया इधर आपकी ATM खराब हो रही है। 5 up, 5 down, 5 up, 5 down. This is where the issue is. 680. Let's see. चल लेना जरा ये एडजस्ट लेना जरा टीएम होगा। Left. देख भाई ये तो आगे नंबर दें। 335 Yeah. 105 ये फ्री ट्रायल ले लिया यहाँ पे आ गया बस। तो क्लिक करें ना, ट्रायल फॉर फ्री। और कौन सा साइज लेना है? फ्री है तो 14 दिन में बनाना है। टेस्ट करने के लिए मेरी रिकमेंडेशन है 10,000 ले लें, फ्री है ना। स्विंग ले लें और 5 ले लें। Oops. रैनी देखनी है। रैनी बड़ी करनी। देखो डन हो गया। अब ये डाउनलोड करते हैं मेटा। ग्रांड के कोई फसाने दे हैगे ना ना जा ऊपर जा थल्ले 1 बजे करनगे, कदों करनगे कुछ पता नहीं। कल 1 बजे ऊपर ही लैगे, जो बनाया थी माल सारा ले गई। मैं घर जाके करते मैं हम ऊपर ही बना। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਸਰ, ਬਣੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਨਾ ਬਣੇ ਹੁੰਦੇ ਫਿਰ ਅੱਜ ਵੀ ਕਰਦੇ ਵੀ ਲੋਸ ਯਾਰ। सवेरे 415 हो गए प्रॉफिट। फिर मेरा सर माइंड 415 हो चुके थे आपके और वापस दिए हैं सारे। वापस देके माइनस में है। अच्छा हो गया बाई ली थी ਹੁਣ बस ठीक। घबराना नहीं है, घबराना हाँ, कोई बात नहीं। काम किसी के पास नहीं है, काम खत्म किया हुआ है कनाडा। यही काम है इस वक्त। हाँ, यही काम है, सारे इधर लगे हुए हैं। टिकटॉक खोलो, कोई खोलो, यही सिखा रहे हैं बस। छोटे छोटे सब टीचर बने हुए हैं, 20-25 साल के। देखो पाकिस्तान में देखो छोटे छोटे लड़के बता रहे हैं जाहिद की ट्रेनिंग देखा, अब लेकिन जाएगी सीधी न्यूज़ कोच। बड़े देखो हाँ जी हाँ जी। सामने हेलो एक सेकेंड। अरे तो सर लिया कोई नहीं है, इधर देन ही है ना। नहीं पर सीख रहे हैं, सीख रहे हैं तो भी सीख रहे हैं सर। गलतियाँ ना वो पता लग गई। नहीं पैसे तो बनते रोज ऊपर मार्केट किसी दिन बता जाना कल $22 बने, कुछ आगे 1700 देता हूँ एरिया फंसा जाना।
कल एरिया मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੀ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਟ੍ਰੇਡ ਬਾਈ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜੀ ਟ੍ਰੇਡ ਤੁਸੀਂ ਛੱਡੀ ਆ ਨਾ ਹੁਣੇ ਜਿਹੜੀ ਕੱਟਦੀ ਆ ਉਸੇ ਟ੍ਰੇਡ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਬਚਾ ਦੇਣਾ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ 50 ਮੈਂ ਲਿਆ ਉਹ ਟ੍ਰੇਡ ਪਲੱਸ 40 ਮਾਈਨਸ ਮੈਂ ਵੀ ਦੇਖੀ ਉਹਦੇ 50 ਮੈਂ ਕੱਟੇ ਇਹਨੇ ਵੀ 20 ਦੀ ਕੱਟੇ ਨਹੀਂ ਲੋਸ ਨਾਲ ਮਾਰਕਾ ਬਣਾਉਣਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਜਾਣਗੇ ਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਕੱਟ ਸਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਵੇਖ ਕੇ ਲਓ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਦਿਖਾ ਕੇ ਦਵਾਈ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਥੱਲੇ ਦੇਗੀ ਜੀ ਫਿਰ ਉੱਪਰ ਗਈ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਹੋ ਗਿਆ ਆ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਠੀਕ ਰਹਾ ਮੈਂ ਕੰਮ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਉੱਤੇ ਜਾਈਦਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਆਇਆ ਕਰਕੇ ਬੈਠੀ ਹੱਥ ਨੂੰ ਕੋਲ ਗਈ ਆਪਾਂ ਪੈਸੇ ਲੈ चले सर यहाँ से वो यूज़र नेम पासवर्ड डालें FTM मेरे को एक मंथ हो गया 7 दफा 5,000 4,000 नीचे जाके फिर बना के प्लस कर देता हूँ पेआउट ने उसकी स्टेज क्लियर करनी है नेक्स्ट मंथ में हमको पब्लिक करनी चाहिए नवंबर में ही करना है मेजरली अपना अकाउंट 10,000 वाला उसमें 500 से नीचे गया तो वो डेमो में चला डेमो में वो तो आपने ऑल डन जी बड़ा दो ना आपका रेडी है हाँ सर नहीं 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 ये अब आपको एक वीडियो देखनी पड़ेगी क्योंकि इसका डॉम ये ऊपर है बाय एंड सेल यूट्यूब पे नहीं मेरी नहीं है ये है ये आपको रैंडम वीडियो देखनी है हाउ टू ट्रेड ऑन मेटा ट्रेडर ये बाय एंड सेल मैं आपको सेट कर देता हूँ मुझे सिर्फ मार्केट्स बता दें जैसे आज मार्केट आज तो मैं तो छोटा उड़ गया थे थोड़ी मैं फिर बड़ा मोटा तो पता नहीं चलता डैश बैग में 1500 ਦੇ ਥ੍ਰੈਸ਼ੋਲਡ ਤੇ ਰੱਬ ਹੀ ਰੱਬ ਕਰੋ मैं लेजेंड खोले ही ਉਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਹੁਣ ਦੇਗੀ ਹੁਣ ਕਰੀਏ ये है नैस्डैक अभी $20 है ना इसका नाम है ना ये आपका चार्ट चल रहा है यहाँ से बाय सेल करना है जब सेल दबाएंगे और बाय दबाएंगे ये आपकी डॉम चल रहा है और एक मार्केट ये नैस्डैक है नहीं इनका मिनी माइक्रो नहीं होता एक ही होता है उसका लॉट साइज चेंज होता है 0.01 ऑल द वे टू 20 यू आप वॉल्यूम के हिसाब से चलते हैं यस लॉट साइज का कुछ नहीं यस तभी आप एक ट्रेड डालें ना यहाँ से बाय या सेल करें ये सेल किया ना मैंने यहाँ से ठीक है अब यहाँ नीचे लिखा है एक्सपोजर ये आपका एक ट्रेड अभी खुला होगा लेट्स डू सेल ये देखें सेल हो गया अब ये प्रॉफिट एंड लॉस चल रहा है 3 सेंट 4 सेंट 5 सेंट अब क्योंकि लॉट बहुत छोटा हमने किया है ना 0.01 तो आपका रूल क्या है टारगेट आपका है 1000 लॉस हो सकता है 1000 ठीक है एक दिन में 500 से ज़्यादा ना हो दैट्स कॉल्ड द डेली लॉस लिमिट यू हैव ए मैक्स लॉस लिमिट डेली लॉस लिमिट मैक्स लॉस लिमिट हाँ 500 एक दिन में भी हुआ तो ख़त्म ये अकाउंट ख़त्म तो 1000 तक पहुंच गए तो अकाउंट पास हो जाएगा तो अब आपके पास ये टारगेट है 1000 पे 10,000 को 11,000 पे ले जाना है अगर 9,000 पे आ गया तो अकाउंट ख़त्म और अगर एक दिन में 500 गया तो अकाउंट ख़त्म नहीं $1 to $1 है एक रखेंगे तो $1 नैस्डैक गई तो $1 मिलेगा
दो लॉट रख लेंगे तो $2 नैस्डैक गई तो $4 मिलेंगे, तो उस तरह चलता है। अब आप देखें ना, आप प्रॉफिट में हैं, कितने प्रॉफिट में? 1 सेंट प्रॉफिट में है, क्योंकि मैंने एक ही सेंट लगाया है ना ऊपर, तो आप 1 सेंट से खेल सकते हैं। 2 सेंट प्रॉफिट में आ गए, 3 सेंट रोल्स रॉयस बुक करा दें, क्योंकि इतना 10,000 के में आपने 5 माइक्रो तो नहीं ले सकते ना। तो अब आप मैं इसको क्लोज करता हूँ, ये देखें 2 सेंट आ गए। अब आपका अकाउंट बैलेंस बढ़ गए, 10,002 सेंट हो गया। या दैट्स इट। आप इसको चेंज करें, लेट्स से आई वुड स्टार्ट विद हाफ 50 से, और 50 से खेलना शुरू करें। अभी 15 मिनट ਦੀ 63 ਹੈ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ 5 ਮਿੰਟਾਂ ਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ 50 सेंट। so मिनी का भी छोटा, माइक्रो का भी छोटा, हाफ, because price moves with this exactly. So let's say the price is 20,001 in .00, ये प्राइस है। So you can go in decimals to buy and sell. That's what they're saying. There is no micro, mini, 10 minis, nothing like this. You decide how much lot do you want to buy. So if you do 1, let's say आप 1 वहाँ लिखेंगे. So when Nasdaq will go down $1, you will get $1 profit or loss. 20,000 20 से अगर प्राइस आ जाए 20,000 में, सॉरी 1 डॉलर का फर्क है ना, कितने पैसे मिलते हैं? $20। आपको 20 मिलते हैं ना नैस्डैक में, यहां पर आप जो रखेंगे 1 to 1 ही मिलेगी आपको। आप $1 का ट्रेड लेंगे तो $1 के मूव होगा। हाँ, अगर आप वहां पर 50 कर देंगे ना, तो जब प्राइस गिरेगी तो 50 सेंट मिलेगा डॉलर के साथ, पूरा डॉलर के साथ। यस यस, I have logged out of your computer. पता नहीं इन्होंने क्या करना है। ओह मैन, come on, pick something. करके सारे घबराए हुए हैं, सारी इतना हाई लगा दिया ना, वो मार्केट खराब नहीं हुई है कल। सब स्केर्ड ही है कि ट्रेडिंग में आ ही नहीं रहा। साहब है वो खेलते हैं इसको सीधा ही 5-10 हज़ार एक दिन में बना के खत्म। 10-11 हज़ार 15 हज़ार 1-2 दिन में FD आ जाएगा, चला जाएगा। ये होना तो ऐसे ही एक बार से बन गया ना जिसका, उसको फिर 20 हज़ार का सीधा अपना अकाउंट ही मिल गया। रोज का 200 बनाओ, 100 बनाओ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਆਪਣਾ ਅਕਾਊਂਟ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਥ੍ਰੈਸ਼ੋਲਡ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ? ये तो सेम ही रहना, सेम ही रहना। एक 100 बना लो, 200 बना लो,
ਤੇ $150 ਤੁਹਾਡਾ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਕਰੂਗਾ ਦਿਹਾੜੀ ਪਏਗੀ ਕੈਸ਼ ਵਾਲੀ ਤੇ 4-5 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਪੈਸੇ ਨਿਕਾਲੋ ਬਣਾਤੇ ਹੈ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਜਾਚੇ ਉਹਦਾ ਫਸਾਇਆ 4,000 5,000 ਲੈ ਥੱਲੇ ਲੈ ਆਉਂਦਾ ਵੱਡਾ ਹੈ ਕੱਢਣਾ ਸਹੀ ਹੈ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਦਾ ਵੀ ਡੇ ਹੁੰਦਾ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਰ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਸੇ ਬੰਦੇ ਬਣੀ ਜਾਂਦੇ एवरीडे बनते हैं, नहीं ज़्यादा सिर्फ वेट करें. वेट करेंगे वो तो आएंगे वेट होती नहीं ना पेशेंट उसका तो कर होती है See, this is annoying. 10 up, 10 down, 10 up, 10 down, 10 up, 10 down. भाई 75 पे स्टक करती है 60 ले जाते हैं 67 65 So far the range we are seeing is 700 to 600. And it is problematic in a sense that where do I enter? If I go short on 700, that's a reasonable. But where do I go long from? So the long, he says, go wait for 500. so when it was getting to 543, we were waiting, hoping, but कहते जब आ जाए 700 तो बड़ा फेंक के तो बस बैठ गए पता नहीं 700 नहीं पता लगे 200 और चढ़ा दें आज की अर्निंग के बाद. उसका कोई भरोसा नहीं है। कल सर इतनी चढ़ा दी थी आज तो दो ने आते हाँ आज दो मार्केट्स कल हैं. तो एक ही था मेटा है ना नहीं माइक्रोसॉफ्ट के देखना तो रिजल्ट माइक्रोसॉफ्ट का तो मैं लास्ट 3 मंथ जून वाली देखी है मार्केट तो भाई कहाँ पे गई अकेली माइक्रोसॉफ्ट है. हाँ हाँ फर्क की फर्क ना समझें, सिर्फ आपने प्राइस इसकी देखें. हाँ हाँ 15 साल पहले भी इसको छेड़ नहीं वो मुझे नहीं मालूम कैसे करना, मैं सिर्फ मार्केट खेलता हूँ. $88 एप्पल सब छोड़ दिए हुए निकाल लिए हुए $88 वो तो बच्चों की इन्वेस्टमेंट थी ना बच्चों के लेके दिमाग में बच्चों को नहीं बढ़ती वो था जब मेरा 5 है हाँ जी ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਬੋਰਨ ਵਾਲਾ ਦਿੰਦਾ ਨਾ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਬੋਰਨ ਕਾਕੇ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਵਾ ले जा सर नीचे क्या कर whole world is waiting. What is Meta is going to say, Microsoft is going to say. सर कल दिवाली है कल सबका बहुत होगा वो किस बेस पे? इंडिया वो में ट्रेडिशन है ट्रेडिशन ट्रेडिशन है जैसे कल ही गोल्ड बाय करते हैं सभी मुहूर्त ट्रेडिंग कल होती है गोल्ड स्टोर्स पे लाइनें लगी थी गोल्ड बाइक जैसे कुछ भी 1 ग्राम से कर ले भाई कुछ ना कुछ इन्होंने करना होता है स्पेशल टाइमिंग होती है इंडिया में स्टॉक मार्केट की मुहूर्त ट्रेडिंग वाओ. इस दिन वो अपनी ना वो बेसिकली क्या है अकाउंट कई ट्रेडर है ना जो अपने अकाउंट बुक्स ओपन करते हैं अच्छा. न्यू ईयर का वो कहते हैं हमें पूजा करनी है और ये डालना है ये दम नहीं आएगा So it's mostly like faith-based trading. Wow. इस पे कल मार्केट बंद हुई ना ये कल मुहूर्त ट्रेडिंग तो होती है मुहूर्त ट्रेडिंग I wanted to open an account on a website called Kalshi. So since you remember, you told me about KALSHI.com. It's only open to US resident. You can place a bet on anything. Go on this. It'll be funny how much you can make every day. Americans, it's American. Yeah, KALSHI.com. Oh sir, वो सिर्फ आप इस पे bet लगा दो ट्रम्प ने जीतना है या उसने जीतना उस पे चल लाइव चल रही है go like so right now 63% Trump and this is real people with real money. Look at the pot size. Do they pay? Yeah, they pay. This is an exchange, regulated exchange. वो Yes, US के लिए ही है US के लिए only. हम
नहीं खेल सकते। So now you can trade on cricket. You can trade. It's a betting site, अपने but भी है ना बैट 365 यहाँ चल रही है। yeah, but this is interesting. कनाडा की बैट 365 है। So let's see. The pot size is $130. हम लगा ही नहीं सकते। It's only for US only? Sorry, it's only for US. You can even bet on movie reviews. That's the crazy part. आ गई है प्राइस आ गया। हाँ मैं बस देखूं थोड़े तो सही. नेक्स्ट आएगी तो उसमें You can predict the weather. You can predict anything and everything. Weather भी. आप कहो कि कल कितने डिग्रीज होगा उस पे बेट लगा दो. It's crazy. Watch this. Look at the who will win the Senate race. Like so, they have election, politics, cultures, movies. मेटा पे लग रही है सर, इसमें मेटा और उस पे लग रही है माइक्रोसॉफ्ट। मैं अभी देखता हूँ. No, they have a daily close. या Nasdaq पे वो So yeah. So go under financials and look at Nasdaq. So it says what will be the price after election of Nasdaq, and they only have two bet, yes or no. There's no no predictions. no, just yes or no. So pure betting. So end of the day price, Friday price. So let's look at S&P, USD. So they have everything. You can. ट्रम्प की 62% आ रही है। हाँ तो ये अमेरिकन वोट कर रहे हैं पैसों के साथ कि बेट लग रही है कि ट्रम्प 62% जीतेगा. एडवांस पॉलिंग भी काफी हो चुकी है। हाँ so लेके निकलना नहीं मैं सर बैठा हूँ. नहीं मैं निकला ही नहीं. मुझसे मैंने वही देखा 53 लगा के टच करके ऐसे ही वापस चले गए. So live bets are opening to Donald Trump is saying. So if you put in $100 on Donald Trump and he wins, you get $158. But if you put on no, you get $263. So if you go on Trump and says no, Trump is not going to win, and you put in 100, you'll get 263. So but you can bet on everything, doesn't matter. सर Nasdaq पे भी लग रही होगी। हाँ लगी हुई है. देखिए वो लिखा हुआ है will Nasdaq close today. If you say 550 or above, 40% it's saying 500 or above. 73% are saying. So this is again, I kind of check quickly what Americans are thinking about Nasdaq. कि कहाँ close करेंगे. नहीं वो ये कह रहे हैं कि 500 से ऊपर close होगी. नहीं वो तो 500 से ऊपर ही है ना. लेकिन अगर आप एक सेकंड थोड़ा सा प्रॉफिट ले लूं. मैं ले लिया. So this is interesting. So when now look at another one. How much is the range for Nasdaq? Look, people are saying now you can. If I was an American, I could go and bet this and make money instantly because we know the ranges. But already we know the ranges. So it's crazy. पर सर hedge fund और दूसरे इसको देख के हाँ ये है betting site. So 365 की तरह, लेकिन इन्होंने हर चीज and they're regulated, certified, everything, and it is close. बड़े पैसे बनाए यार ये तो IPL $200 ना 1200 जो जानती ना वो थल्ले दे देंदी है तो मैं सारे बैठ ला देना मैं एवरेज करके निकल जाना अपना प्रॉफिट लेके भावे हारे भावे नहीं ये रही आज का मियामी का टेम्परेचर पे बेट लग रही है कि आज अगर 86 से 87 डिग्रीज रहेगा तो कितने पैसे मिलेंगे. ये भी लगा रहे हैं बैठ. Okay, another one, snow and rain, hurricanes, natural disaster. पक्के गए Oh yeah, look, okay, there is somebody is betting on major earthquake this year. मेरे फ्रेंड का जो यूएसए में पंप है वो बोलता है सुबह आगे 5 मेरे एम्प्लॉय आते हैं और एम्प्लॉय नहीं प्ले करने वाले 10 हज़ार लेके आते हैं. उनकी कहता मैंने स्पेशल सीटिंग बना के रखी है, चेयर लगाई है, उन्होंने आगे टिकट सब जितनी ले लेनी है, दोपहर तक उसको सारा स्क्रैच करते रहना है. 5,000 की ले ली, 7,000 की ले ली, 10,000 की ले ली, बूढ़े कहता सारा दिन बैठे रहना है. तो कहता है कितना बना के जाते हैं तो मैं इमेजिन नहीं कर सकता मैं कितना. कहता है एवरी डे 2500 प्लस जाते हैं जिनको टच ਸਾਰੀਆਂ ਲੈ ਲੈਣੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ
ਤੁਸੀਂ $2000 ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਜਾਓਗੇ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਨਾਲ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਇੱਕ ਰੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 50 ਜਣੇ ਨੇ ਲਈ ਆ, 50 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 5 ਜਣੇ ਨੇ ਤੇ ਨਿਕਲਣੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਟਿਕਟ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ 70-60% ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਾਪੀ ਹੈ ਨਾ ਇਹ 60-70% ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੇ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕਾਪੀਆਂ ਲਈ ਲੈਣੀਆਂ ਗੇਟ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਬਣਾ ਕੇ ਜਾਂਦੇ। Will there be a new COVID variant? $100 इन्वेस्ट करें 460 मिल सकता है if you are right. अगर उन्होंने अनाउंस कर दिया कि न्यू वेरिएंट है तो पैसे मिल। वो एक डाइवर्जन की लाइन आई ES पे 15-10 प्राइस इज गोइंग डाउन। अभी बाय नहीं बनती इसमें अभी वेट ही है। I just like to see all the dumb betting. What is the dumbest bet here? Space. Yeah. See, if you go try to sign up, it says, oh, you must be a Canadian, must be an American. The biggest one is presidency. I don't know, 62%. And 1 lakh, नहीं कितना? Wow, what? How much money? $107 million got traded so far. So ये regulated exchange हो Regulated exchange. betting exchange हो Betting exchange. Yeah. अपने कनाडा में तो ऐसे नहीं है। कनाडा में एक है शायद MGM वाले। सब ये ईटम इको वाले ने गुड बाय नाले ने MGM ग्रैंड हम यहाँ पे है। एक दफ़ा खुला है MGM गुड बाय नालों ने खोल दिए MGM Canada. इधर मोबाइल पे ऐप है रेगुलेटेड कर दिया। Yeah, it's called Bet MGM. Bet exchange। Or and another called for sports, they have something called Fan Deal. You probably have seen the ads. Fan Deal. इसका जो CEO है वो कहते हैं 12th grade का। सर पैसे बनने चाहिए। गैम्बल वही कर सकते हैं दूसरे बंदे नहीं कर सकते। हाँ माइक्रोसॉफ्ट वाला भी 12 पास ही है। पूरी लास वेगास स्ट्रिप से 11 या 12 होती है। Odds of winning. Because with this, you can look at true people who are betting based on money, right? How much money drives emotions. So emotion is. So if somebody bets on Kamala Harris, they have 63% chances of losing and 38% chances of winning. आ जाए यार, मैं तो जंग तो नहीं करेगा एटलीस्ट। है उसने बोला है सीधा कहता न्यूक्लियर पे अटैक करो क्या तो ड्रामा कर रहे हो इजराइल को सीधा बोला न्यूक्लियर अटैक करो वो अगली नहीं देखता वो बंदा भी बंद हुए तेल तूल बंद होगा आना जाना तो टेस्ला बढ़ेगी उधरों क्योंकि टेस्ला स्पोर्ट पे आ गया ना वो टेस्ला ही सारा पैसा ला रहे हैं आ गया इलेक्ट्रिक का कुछ बना देना हमें 646, nothing, no trade at all. अभी कुछ नहीं है एक्टिव लो लगा ही दे Consultation. 50 की फेंक देनी है सर आ जाए ना चले जाए स्पेशल लो पे किधर? मैंने 500 50 की फेंक के तो कम से कम 2-3 हज़ार तो लेगी ना उसमें 20-25 पॉइंट तो चाहिए उसमें नॉर्मली गिरा रहे हैं 45 आ गई 43 लगा दिया था सर आप ये देखना फिर मैं 600 की रेंज में रख के मैं तो बंद करके बैठा हूँ कपड़ा। बस ठीक है यानी 600 पे 600 मेरा कोई हेडेक नहीं है। हाँ देखिए आप 375 से प्लस हैं 600 से नीचे हैं मेरे हिसाब से। मुझे तो उन्होंने अप्रूव इससे पे किया था जो मेरे 11 में से 3 अप्रूव हो गए हैं ना नो प्रॉब्लम। 600 पे ये यार चलो 12 दिन लग जाएंगे। हाँ, हाँ, हाँ। पर वैसे अपनी नॉलेज के लिए भी ये 20% का इसका वर्क वो है वो I still think 20% of 3,000.
So your payout is 3,000. Highest payout amount cannot be more than 20%. However, in Apex, I do know a rule. Rule is that you can make 1,000. You're right and I'm right. Both are right in a different sense. Because the way I promote 600 is, it's highly unlikely everyday person will make more. So just to look at the mean number of the math, very highly unlikely somebody will continue to make 1,000 every day, right? So, but we can do 600 or as long as above 375. So, and you're right. So the trading plan is right. So what happened with Gurvinder last time, every single day he made $1,500 on Apex, on the $300,000 account, right? What was the target? 7,500. No problem. So 1,500 and he traded for 10 days. So 10 days, so you got $15,000 account balance. You're above 7,500, so good. So they looked at what is your daily, so they looked at 30% of 15,000. Yeah, so, sorry. No, single days. So single day is below 4,500, right? So it wins. They gave him the payout of 3,000. Yes, they did. No problem. So here too, if you start to make $1,000 every day, right? Because problem again happens, nobody makes exactly 1,000. So let's do 1,000, then you do 900, 400, doesn't matter. And your highest day is 1,000, right? So they're gonna look at this number, highest day, and say, this must be below your total profit. That's, you're right, Hunter. It's just because I know my traders here, worldwide. They're not going to be able to do 1,000 instantly, consistently. So I lock them between 375 to 600 deliberately, because then they won't overtrade. If I don't give them a target, they're like, target hi koi nahi hai. So plan ke through 375, 600. So again, same thing happened with Legends, right? We didn't plan it, and they caught us by surprise. Yeah. I thought EA didn't have this headache, but so what are we up to? 3651. Again, nothing crazy. Now in Legend, I have one account. I just make 200. That's it. Yes. बड़ी अच्छी सर चल रही है न्यूज़ अभी, कुछ तो कर रहे हैं, नीचे लेके जा रहे हैं, तो कुछ तो कर रहे हैं, धीरे धीरे लेके जा रहे हैं. चार बजे पूरे मार्केट ने ऐसे ऐसे घूमना है. ओ सर, 4 के बाद 4 से अब पता नहीं 4:15 है. 4 बजे ला दी 50 पॉइंट पूरी ऊपर 50 400 हाँ 4 बजे का लाई पूरी होनी सुट रहा है नीचे वो 670 के आसपास रोड़ा जी हाँ जी 755 मैं टेंशन चला दे रहे हैं टेंशन चला दे टेंशन ਤਾਂ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਕੀ ਕਰੀਏ ਚੱਲਦੀ ਵੀ ਆ ਤੁਸੀਂ ਟ੍ਰੇਡ ਤੇ ਆਪੇ ਹੀ ਵੜ ਜਾਂਦੇ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਛੱਡੋਗੇ ਤੁਹਾਡੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਦੂਰ ਹੋਏਗੀ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਫੇਸ ਤੋਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਬੜੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਟ੍ਰੇਡ ਕਰਨੀ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਟ੍ਰੇਡ ਕਰਨੀ तो समझ नहीं आ रहा जी सीधी जी गल है मैं ਤੁਹਾਡੀ ਫੇਸ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੜ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਪਿਆ ਗਲਤੀਆਂ ਕੀ ਆ गलती ये है कि जरा ट्रेड लाने पुठा जाता हो गई गलती है एको गलती है बाकी कोई गलती नहीं है ट्रेड कितने बड़ा भाई वो तो उन्होंने ऑर्डर बुक दसेगी कितने गलती की है
ਸਾਰੇ ਮਤਲਬ ਡਿੱਗਦੀ ਹੋਈ ਚ ਵੀ ਬੜੇ ਤੇ ਤਾਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਵੀ ਉੱਪਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। FTT ਦੇ 4 ਅਕਾਊਂਟ ਸੀਗੇ ਪਿਛਲੇ ਫਰਾਈਡੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਔਰ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਮਿਲਾ ਕੇ 4 ਉੜ ਗਏ। 2 1.5 ਲੱਖ ਵਾਲੇ 2 25,000 ਵਾਲੇ ਔਰ ਸਭ ਵਿੱਚ ਪਲੱਸ ਸੀਗਾ। ਇੱਕ ਚ ਤੇ 1.5 ਲੱਖ ਵਾਲੇ ਚ 2,000 ਪਲੱਸ ਸੀ, ਇੱਕ ਚ 1800 ਪਲੱਸ ਸੀ। ਗਲਤੀਆਂ ਕੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਲੋਸ ਨਹੀਂ ਕੱਢਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਥੱਲੇ ਜਾਂਦਾ ਜਾਣ ਦਿੰਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਣ ਦੋ ਐਪ ਦਾ ਹੀ ਕਰਦੇ ਦਈਆਂ ਤੋਂ ਜਾਣ ਦੋ ਏਦਾਂ ਕਰਦੇ ਨਾ ਜਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਫਿਰ ਜਾਣ ਦੇ ਸਾਡੇ ਜਾਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆ ਗਿਆ। ਕੱਲ ਵੀ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕੱਟੇ ਆ, ਪਰਸੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕੱਟੇ, ਲੋਸ ਕੱਟਣਾ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਬਚਾਓਗੇ। ਇੱਕ ਉਹਨੇ ਲੈਜੈਂਡ ਵਾਲਾ ਹੈ ਖਿਲੌਣਾ ਜਿਹਾ ਬਸ ਉਹਦੇ ਚ ਉਹ ਮੈਂ ਬੰਦ ਕਰਤਾ ਬਾਉਂਡਰ ਲਾਸ ਹੋਇਆ ਨਾ ਬੰਦ ਕਰਤਾ। ਮੈਂ ਇੰਡੀਆ ਗੱਲ ਕਰਨ ਚਲਾ ਗਿਆ ਮੈਂ ਤਾਂ ਥੋੜਾ ਘੁੰਮ ਫਿਰ ਗਿਆ ਜੀ ਥੋੜਾ ਮਾਈਂਡ ਚੇਂਜ ਕਰਕੇ ਆਉਣਾ ਲਾਸ ਹੀ ਕਰੀ ਜਾਣਾ। ਭਾਈ ਭਤੀਜੇ ਦਾ ਬਰਥਡੇ ਹੈਗਾ ਮੈਂ ਚਲੋ ਭਰਾ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਤੇ ਦੇ ਦਾਂ ਮੈਂ ਉਹ ਕੰਮ ਤੇ ਕਰ ਦਈਏ। ਟੈਨਸ਼ਨ ਫਰੀ ਹੋ ਗਏ ਕਰੋ ਸਰ। तो टेंशन फ्री और कर लूंगा नवा अकाउंट कोई अकाउंट केड़ा लईए कोई समझ नहीं आ रहा। ऑनलाइन आप Yeah, I'm still online. हाँ नहीं करते ये ऑनलाइन होते हैं Yeah. No, right now it's open discussion, so no. अच्छा यार देखिए, मेरा जो क्वेश्चन मैं आपके सामने ट्रेडिफाई में बैठा हूँ, वही ट्रेड मैं ले रहा हूँ, वही नंबर आपको जा रहे हैं, 7 अकाउंट है ना। सर जी साडे लाली लाल नजर आते ने नहीं मैं अपनी गल दस रहा किसी की नहीं नहीं उनके भी ग्रीन है, मैं ग्रीन की बात नहीं, आप दोनों के भी ग्रीन है। हाँ सिर्फ ये हो ये रहा है, मेरी जो फीलिंग आ रही है, हाँ जी आप प्राइस एनालाइज नहीं कर रहे, शायद मेरी फीलिंग है। मेरी देखिए अब होता ही है, मैं आपको अपना बार बार एवरी डे देखता हूँ। हम सुबह आते हैं, हम सुबह बैठते हैं, आप एटलीस्ट 2 माह से बैठ रहे हो, 2 माह से 2 मंथ हो गए 14 अगस्त को आना शुरू किया जी 14 अक्टूबर टाइम मंथ ठीक है। बैठते सार मैं आपसे सिर्फ पूछता हूँ प्राइस क्या है, हाँ जी प्राइस क्या है, ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल राइट अवे स्विंग देख लेते हैं कहाँ से आ रही है कहाँ जा रही है, ठीक है। आज सुबह हमने बैठते सार उन्होंने क्या कहा, स्टे इन शॉर्ट, ठीक है। हाँ जी तो हमारा आइडिया था कि शॉर्ट ही करना है ना, तो अब शॉर्ट के लिए मैं बैठा रहूं अभी तक, जब तक कोई रेंज नहीं आती। पहला ट्रेड जब नीचे एरियाज देखिए, ये एरिया बने ना, आते सार मैं इसका वेट कर रहा था 500 का, नहीं आई ना, नहीं आई। ठीक है। लेकिन इससे पिछला वाला एरिया टेस्ट हुआ, बाकायदा प्राइस वहां से ऊपर गई। तो सिर्फ अगर आप प्राइस का वेट करते रहे एवरी डे सर ये समझ नहीं आ रहा सर ਆਪਾਂ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਸ ਦੀ ਵੇਟ ਹੀ ਕਰਨੀ। हाँ वो भी वेट करें सारे, प्राइस ही समझ नहीं आ रहे केड़े प्राइस की वेट कर रही है नहीं। 500 की वेट कर रहे हैं हाँ 500 का वेट करें, नहीं आए तो नहीं करें। उससे पहले ट्रेड क्यों किया, क्वेश्चन ये है। वो बैठी है पीछे देखो, उसने वो दोनों 2 ट्रेड की दोनों प्लस की है। नहीं ठीक है बहुत अच्छी गल है एरिया जी कर दी भी ना वो भी सर मेरे को बैठ गए वो मैं लॉट हाँ आप उनके साथ वो कह रहे हैं मेरे को बैठ गए मैं बहुत वेट करता जब मैं बाहर ਮਾਤਾ ਦੀ ਪੇਸ਼ੈਂਸ ਸਾਡੀ ਇਹ ਆਪ ਕਰ ਲੋਗੇ ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਬੈਠਦੇ Hey, boss. I don't know, you have no order number and you send them the money. Now they're gonna receive the money, but they can't, let's see. Do I have to send them an email or something? Yes, now we're gonna open a ticket. So always have an order number before you send them the money. I wanted to have money there. No, but because at the last moment, last page, you have to supply an order number. So that's how they will open it, right? Now they have received, I don't know, when did you send the money? Oh, like around 10 o'clock In the morning? Today? today. But that takes 3 days anyway. Really? Yeah? Okay, anyway, we'll see. Okay. Let's see. Sorry, man. I'm just. No, I'm not saying, I'm just saying, you have sent them money in the dark hole. Now let's see if we can track this. Okay, let's see. कल मंगल था परसों डाउन दिया और उस दिन शुक्रवार I've been doing good in the past few days. Good, areas? Over an hour. Areas, right? Areas, yeah. Just areas. Overbought. उस दिन लंबा ਮੰਡੀ ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਣ ਨੂੰ 16 ਤੋਂ ਜਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਜਦੋਂ And even the areas I let it go like 11 points down. Yeah. Then I stop. लेजेंड के बाउंड I don't like go up there. It wasn't working for ਚੇਂਜ me. ਕਰਨਾ कल मेरी गोल्ड की ट्रेड बटन मेरा माइंड स्विच हो गया $400 की ट्रेड बाई माइनस हो गया, मेरा मैक्सिमम आता है 500 का मैक्सिमम। ਨਾ ਕੱਟ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆਏ मैं स्विच करता नहीं
रिवर्स मार के ओके प्लस की थी $800 दे गया ओ Same वेरी time गुड पे। सेम वेरी कोई मेरा डिसीजन गलत थी नेक्स्ट सेकंड हालांकि वो मुश्किल मार्केट करते हैं गोल्ड वाली पर मेरा डिसीजन गलत थी आई ਉਹ ਸਵੇਰ ਦੇ गोल्ड ਦੇਖੋ, में ਤੁਸੀਂ 4 दिन ਵੇਖੋ, की थी ਉਹ 3 दिन ਸਵੇਰ वैसे ਦੀਆਂ मैं 2 कमाया ਟ੍ਰੇਡਾਂ ਲਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਸਿਰਫ होना ही हो चाहिए हाँ, मैं देखो जो 4 कॉन्स्टेंट को बहुत बार करता है तो मेरा नेगेटिव हो आप मिस कर सकते हैं तो 4 ट्रेड है ये बात से एक ही चीज चाहिए और ये चीज पल्ले की गाड़ी यहाँ था दिमाग का अट्टा है रफे साहब तुम दस कर रहे हैं उन्होंने एरियाज तो वे कंट्रोल नहीं है ਵੇਟ ਕਰਨੀ ਮੈਂ ਵੀ ਵੇਟ ਹੀ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਔਰ ਆਪੇ ਵੀ ਵੇਟ ਹੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਏਰੀਏ ਦੀ मैं सिर्फ ਕਿਸੇ ਬੰਨੇ ਮਾਰਕੀਟ मैं लोकेशन करता हूँ डेली ਜਦੋਂ लोकेशन ਤੁਸੀਂ करते हैं ਕਹਿੰਦੇ दैट्स बना इट लिए, नथिंग मैं तो एंटर है जरा आप सर कहते हैं और कुछ नहीं करते। ਨਹੀਂ ਬੰਦ ਕਰਤਾ ਹੈ ऐसा aggressive ਅਸੀਂ हो ਕਹਿ जाए। ਦਿੰਦੇ ਹੈ सारी ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁਣ नहीं ਕਹਿ ਰਹੇ नहीं ਬਾਹਰ जो ਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਥੀ आते ਕਹਿ हैं ਨਹੀਂ ना ਰਹੇ ਵੈਸੇ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਦੋਂ ਬੰਦਾ ਐਗਰੈਸਿਵ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਾਇਆ ਨਾ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਸਰ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਵੀ ਮੈਂ ਉੱਤੇ ਲਰਨ ਬੈਠਾ। ਚੀਜ਼ ਕਰ ਇਹ ਵਾਲੀ ਉਹ ਲਰਨ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪੁਆਇੰਟ ਉਹ ਲਰਨ ਕਰ नहीं मैं मैं समझ ना था ये सिंपल लगती है पहले सर तुझे ले लो मैं आते हैं ਸਰ ਫਿਰ ਇਹ ਡਾਊਨ ਦੇ ਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਨਾ ਸੌਫਟਵੇਅਰ तेरी समझ है ना समझ वो चाहिए ਨਾ ਇਹ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਓਨਲੀ ਡਾਊਨ ਦੇਖਦੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਟ੍ਰੇਡ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਈ ओ भाई ओवरसोल्ड ओवरबोट भी देख लिया कुछ देख लिया? पल्ले ही नहीं पैंदा ਫਿਰ ਉਹ ਏਰੀਆ ਦਾ ਦੇਖਣਾ ਨਾ ਓਵਰਬੋਰਡ ਓਵਰਸੋਲਡ ਏਰੀਆ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਣਾ ਹੁਣ ਵੀ ਦੇਖੋ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਟ੍ਰੇਡ ਲਈ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਲਈ ਕਿਉਂਕਿ ਹੈ ਹੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਰਹੀ ਟ੍ਰੇਡ ਬੰਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੈਟ ਹੋ ਗਏ ਨਹੀਂ पता नहीं को तो सिखाएंगे एक हफ्ते के मोरल बोर्ड डाउन हो गया ਮੋਰਲ ਡਾਊਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਦਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ होना तो नहीं चाहिए लेकिन हो गया ਜਦੋਂ ਡਾਊਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਦੋਂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਹੋ ਰਹੇਗਾ ਮੇਰੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਸੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਕਰਨੀ ਉਸ ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਂ, ਗਲਤੀ ਆਪਣੀ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਰਿਅਲਾਈਜ਼ ਕਰੋ ਕਿਉਂ ਹਾਂ, ਕੁਛ- ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੁਛ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ- ਬਾਕੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ सर देखिए सर हाँ। वीकेंड पे सुनो दोबारा पता नहीं हाँ नेक्स्ट वीक बनाऊंगा ਇੱਕ ਡੈਨੀਅਲ ਜੀ ਦਾ ਲੈਕਚਰ ਲਓ दोनों लेक्चर लो दोबारा वीकेंड ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਥੇ ਬੂਸਟ ਹੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ नेक्स्ट वीकेंड पे नहीं आना नेक्स्ट वीक आना स्पाइडर वाली कहानी नहीं है मकड़ी कितनी बारी गिरती है कितनी बारी ਇਹ ਲੁੱਡੋ ਖੇਡਦੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡੰਗ ਪੈ वो जगह ही है फिर उन्हें 98 ਦੇ ਬੰਦੇ ਇਹ 8-9 ਵੀ ਖਾਣਦੇ ਠੰਡ ਦਾ ਹੀ Somewhere on my Graduate the dependent. first track She's website not- on my account. इट मींस की है No, no, you will have an order number, yes. इन्हें रिवर्स करो माइंड ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕਿਹਾ ਨਾ So you order and then they give you an order number? पहुंच जाते Yes. हाँ बोल पर वो दो। डिटेल नहीं Only करते this. हाँ, वो नहीं तो करते। जस्ट टिक कराओ ना इनमें तो 98% फाइनल लो वो 2% का They're 50% off. वो दो तो सी करता है हाँ ऑफ कोर्स तो यस कर देना ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਡ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ये ऐसे ते जब मैं जितना हमेशा नुकसान 10 से 9 बारी नुकसान एक अद्धी बारी कमाया नेस्टेड पे फिर भी थोड़ा वो चल गया ठीक है ਨੈਕਸਟ ਇਜ਼ ਓਨਲੀ ਏਰੀਆ ਨੰਬਰ ਬਸ ਪੜੋ ਹੁਣ 500 ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਸਵੇਰੇ ਬੈਠਾ ਸੀ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਬੋਰਨ ਆ ਉਹ ਸਿਰਫ ਏਰੀਆ ਹੀ ਕਰਦਾ ਉਹ ਕੱਲ ਵੀ ਏਰੀਆ ਉਹ ਵੰਸ਼ ਉਹ 700 ਦੀ ਵੇਟ ਕਰਾਂਗੇ ਕੱਲ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਬੈਠਾ ਸੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿੰਨਾ ਉਹ 100 ਪੁਆਇੰਟ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਰ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਉਹ ਚੱਲ ਗਿਆ मैं कल्ले को बिल्कुल ये discipline मुंडा है सी होगा। प्रोफेसर सी ਆਪਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਧੇ ਉਹ ਵੰਸ਼ ਨਾਮ ਹੈ ਉਹਦਾ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਨਾਮ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ 700 ਵੀ ਲੈ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਪੂਰਾ 700 ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ 695 ਦੇ ਲੈ ਲਈ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਅਸੀਂ 670 ਤੇ ਆਲਰੇਡੀ ਫਸੇ ਹੋਏ ਸੀ हाँ, तो अब ले नहीं ना सकते ਹਾਂ फिर ਲੈ ਨਹੀਂ दोबारा। ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਉਹਨੇ 695 ਤੇ ਮਾਰਕੀਟ ਗਈ ਉਹਨੇ 5 ਮਾਈਕਰੋ ਸੱਟੇ ਝਟਕਾ ਮਾਰਿਆ 45 ਕੱਟਿਆ $45 ਆ ਗਏ ਉਹਨੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਅੱਛਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਟ੍ਰੇਡ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਹਾਂ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀ $45 ਲੈ ਲਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸੁਣਿਆ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਹੀ What kind of ਕਹਿਣਾ payment would take, like wire transfer? Wire. ਐਫਡੀ ਦੀ ਸੇਲ ਲੱਗੀ ਆ 5 ਨਾਲ 1 ਫ੍ਰੀ ਹੈਲੋਵੀਨ ਸੇਲ 5 ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਲਓ ਫ੍ਰੀ ਵਾਲਾ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਫ੍ਰੀ ਕੌਣ ਬਣੇਗਾ ਸਭ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਲਿਓ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕੀ ਸੀ ਪੈਸੇ ਦੇ ਹੁਣ ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੈਗ ਪੈਕ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਰਕੀਟ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਫਾਇਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬੈਠਣ ਦਾ ਮੈਂ ਚਾਹ ਪੀਤੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ 700 ਪੜਾਇਆ 600 ਕਿੰਨੇ ਪੜਾਇਆ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਐਵੇਂ ਦੇ ਜਾਵਾਂ 640 ਬਣੇ ਬਹੁਤ
पढ़ावांगे कल परसों सारे दिन में अपने बनाने देखे थोड़ा ज़्यादा जो बना रहे हैं जहाँ ट्रेड आएगी तो जावांगे साढ़े 12 वाली देखनी है कैंडल हो गई 12:30 No, still waiting. और जो इंस्टिंक्ट है ना कि मैंने ट्रेड डालना है अभी मेरा ना अभी बड़ी ख्वाहिश है कि मैं ट्रेड डालूं मैं अभी आपके सामने 1000 बना हुआ ना ट्रेड डालने लगा हूं 1 माइक्रो उठाऊंगा ट्रेड डाल दूंगा सेल डालने लगा ये देखिए 1 माइक्रो आपके सामने ट्रेडर 5 पर डालेंगे ये लेंगे 94 सेल एंड सेल अभी 10 और ये देखिए $20 बने 20 तो नहीं बने अभी तो $2 बने सो मेरी ख्वाहिश भी पूरी हो गई ट्रेड भी डल गया एरिया पे है 600 पे नहीं पता कि ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਮੈਂ ਦੇਖੋ ਵੱਡਾ ਮੈਂ 20 ਨਾਲ ਟ੍ਰੇਡ ਮਾਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਮੈਂ 5 ਨਾਲ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ ਪਰ ਮੈਂ ਡੇਲੀ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਜਾਂ 5 ਨਾਲ 20 ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਜਦੋਂ 1000 ਦਿਸਦਾ ਮੈਂ ਕੱਟ ਦਿੰਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਦਿਸਣਾ ਹੀ ਸਾਰਾ 300 250 ਦਾ 150 250 ਉਹ ਮੈਂ ਕੱਟਦਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਫੇਰ ਕਵਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਨੈਟ ਦੇ ਕਵਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ no problem ਨੈਟ ਦੇ ਕਵਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ so my position is 655 1 micro sell that's it जितना ज़्यादा लॉस देखोगे and I've seen $10 of profit right now and I'm closing because 1 माइक्रो से इतना ही मिलना है ना बहुत 1 माइक्रो से 100 तो नहीं मिलना तो लोगों को होता है 1 माइक्रो से 200 निकालेंगे रोज 100 बना के 100 150 बना के जा रहे Yes, हैं yes. क्यों बना के जा रहे हैं एक से कर रहे हैं so overbought 1 micro sold it make 5 points get out ये ट्रेंड से ज्यादा चलते हैं नीचे गिर रहा है नीचे को बेचते चलेंगे ऊपर चलो ऊपर को बेचते चलेंगे ऐसे करते हैं ये लें जी दूसरे पे भी बन गए again close the trade because remember 1 micro goes against you I will do average far no problem but look that one swing on overbought gave me $10 $2 commission $9 बढ़ गए right so वो बढ़ते 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 कहाँ चले गए 1024 but the commission is so high man on these right? Tradeify is horrible look at this man I made 1026 they're giving me 745 so 1026 minus They're making 7 money. no $300 and $281 commissions man they're like GFF now I feel तो ਤੁਸੀਂ ਸਰ ਜੱਜ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਨਾ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਮਾਰਕੀਟ ਅਪ ਜਾਣੀ ਆ ਡਾਊਨ ਜਾਣੀ ਆ ਹੁਣ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਇੱਕ yes any desk ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਫਸ ਜਾਂਦੇ ਫਿਰ ਏਰੀਆ ਵੇਟ ਕਰੋ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਚਲੇ ਹੀ ਜਾਵੇ ਏਰੀਆ 1906. Sorry? No. What happened was they just said, please don't talk with public 9 to 11 because that's the true listening time. See, right now it's 12:37. I can have a general discussion. So they only say, please talk after 11 because from 9 to 11. कर रहे थे ट्रेड कर हाँ वो कह रहे सुन रहे हैं ना कि मैं क्या कह रहा हूँ तो हालांकि 20 सेकंड डिलेड है फिर it's okay so discussion is really after 11 or anything like that but then the technique last Saturday we discussed with overbought mid-band overbought sell every day that person is now applying more and more and they're saying we're getting a result like single swing mein nahi kar rahe so let the swing go up touch mid band make a diversion come down oversold 100 points I don't care let that swing go mid band go back break previous low and then take your 5 points I was watching it. yeah so that works nahi jitni marzi ki aa jaye ये जितनी देखें ओवर जितना मर्जी पहली स्विंग छोड़ दें must break this and then you can do a sell again coming down doesn't matter 100 points 50 points 60 points swing you let it touch mid band and make it break lower low and then Sometimes even on the second one it goes back up. yeah exactly but your chances because what happens is everybody gets stuck here oh I think it's overbought oversold overbought and then what happens is it goes more
touches and then you're like, now I'm stuck in a What trade. I do and it's working for me, I let it go 11 points. Then after 11, on the second one. Yes, 11 higher. So if it's going down, So, okay. so 205 going down, 11 points, Yes, and then enter. and then I. Okay, that's fine too. But even, Because but then at you're, that time the trend changes too. there, that's fine. So, but don't enter first attempt. Yeah, yeah. Second. ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਵਿੰਗ ਦੀ ਵੇਟ ਵੀ ਕਰ ਲਓਗੇ ਨਾ ਇਹ ਘੰਟੇ 'ਚ ਇੱਕ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ Yes, yes. ਇਹਦੀ ਵੇਟ ਕਰ ਲਓਗੇ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਬਣਾ ਲਓਗੇ ਕਿ ਇਸੇ ਸਵਿੰਗ ਦੀ ਇਹ ਵਾਲੀ ਸਵਿੰਗ ਤੇ ਬਹੁਤ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਆ So you send them $600, but did you place an order? I just placed the order now. Okay. So, This is just now. so how much money is 600? It's 599. Okay, that's fine, that's Yeah. fine. ਮੈਂ $30 ਲੈ ਕੇ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਸਵਿੰਗ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦੂਰ ਸਵਿੰਗ ਆਈ 35 ਲੌਂਗ ਚੋਂ ਆਹਨੇ ਉਹ ਮੈਂ ਤੇ ਐਵੇਂ ਦਿਮਾਗ ਕੀਤਾ ਵੀ ਲਾ ਲਵਾਂ ਬੈਠਾ So again, 660, watch this. It is at 96.05. Let it rise more, more, more. So wait for the mid-band, let it break higher, and then sell. Even if you sold 1 micro here, it's not a huge deal. So 660, 1 micro, it should give you $10 in minimum. $400 देखते हैं ना ट्रेड में I'm already up to 950 and let me close the deal. The moment it will make a black candle. अभी मिड बैंड ले रही है वो Yeah, ठीक है मिड बैंड लेने जा रही है नीचे उसको करके let's see. एक दो पॉइंट नीचे लेके मिड बैंड हम देखते ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਥੱਲੇ ਸੁਣ ਹੁੰਦੀ ਹੈ If it go- ਇਹਦੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਵੜ ਜੰਨੇ ਨਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਵਾਲੀ ਸਵਿੰਗ ਥੱਲੇ ਥੋੜੇ 3-4 ਵਾਰੀ ਜਾਣ ਦੇ 2-3 ਪੁਆਇੰਟ ਇਹ ਜਦੋਂ ਅਪ ਸਵਿੰਗ ਆਏਗੀ ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੜ ਜਾਓ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੈਲ ਚੱਲ There you go. I'm done. The $20 from this. So, हैं? 640 से लिया था हाँ हाँ आपने जरा अर्ली ले लिया ना 640 से नहीं नहीं आपने बाई किया था अच्छा अच्छा मैं सेल वाला बंदा हूँ मैंने एक घंटे का लोएस्ट इतना ही था 635 हाँ। तो मैंने 640 में ले लिया so 1028 okay लॉन्ग भी ले लो ओवरबोर्ड भी ले लो शॉर्ट भी ले लो okay Ravi like we're gonna have to probably wait 1 day Okay. because the order got placed, payment got today, but now you have an order number which is right here. Go back. Because I cannot open a ticket that fast, but if you go in your order window, you will see an order number. Yeah. Now you have an order number and a payment. Now if there is an issue, Okay. we can say, like now you have an order number. So you're getting a hang of areas How do they now. know- Yeah, I'm getting a hang of it. That's good. That's good. And so again, the once you master Nasdaq areas, you're not gonna go to anything else. Yeah. Quickly see when to sell, and the highest probabilities are R2 and higher. Right. And that's, but same idea today, when it was coming down, I skipped S1 because I generally skip one box, Right. Yeah. especially when the distance is so little. Yeah. But so I'm so happy that you're doing areas properly now. I'm doing areas and then I'm just looking at those boxes. Okay. It usually goes in 20, 30 points. The Fibonacci boxes, Yeah, right? yeah. That's good. So it's working out. So that's I good. mean, Friday didn't work out, but it's okay. No, Friday was the one stupid thing was your Tesla earnings, that same next day kept going up, right? नो वर्क But even if you entered at R3, because I was stuck, I entered R1 because market was up 85 points. Then I did an average on R2, finally did an average on R3 and higher, and my average came to 626. And it gave me profit couple of times, and then finally it, because if you average too quick, if I do now and then quickly, it's not doesn't make a difference. Even on our website, we have an averaging tool. Give it some distance. So if 1 micro goes like a minus $200, that's a 100-point swing. Yes, do an average.
then you will come in the middle. And every average trade, you have to get out at break even or as little loss, because you know sometime it will give you minus. उस दिन जब आप average से भी आपको थोड़ा सा उसने दिखाया और फिर जो है ना. So don't think you will make money in an average. Yes. So average is good to get your money back at least. I mean, you don't make- Break even. As little loss as possible, but if you do average with sensibly far. Right, yeah. Because I know some people, if they average too quickly, then they'll get stuck, right? So, I've been doing many, you know. That's Macro good. Was, I don't know. no, But, see, the thing is, once you're at the area, so once it gets minus 1,000, then I do average. perfect. Yeah. Same lot size. Yeah, So just one lot. So you're starting with one lot. Yeah, just one lot. I don't, yeah. Okay. लेजेंड का भी पेआउट ले लिया किसी ने? नहीं, अभी लेजेंड के सारे पीए में जा रहे हैं लोग. मेरे साथ ही है मेरा. So I don't have to put them a ticket or anything? No, not today. Okay. Because they don't have the order number, so how do they know when that the money goes? to Yeah, the so tomorrow or day, if it doesn't show up automatically, Right. we will look at, because they get a name though, right? And they Yeah, get a yeah. name where's the money coming from, matching with your name in your right. profile. Right. So, I want to like ask them about my accounts too, the other accounts that is like, you know, I make too much money on it. yeah, keep making. But I don't know how much to make. No, what's the highest number? We have it for 5,000 something. 5,800, 5,800, divided by 20%. Until you get to $29,000 of profit, they're not gonna pay you. Okay. So 29,000 plus 150,000. Your balance must be 179,000 before they pay you. Okay. So you just Doesn't matter gotta, how much to make a day. I don't care, but you gotta get to 180,000 before they will pay you. Yeah, okay. How do you do that calculation? Just want Okay, to know. take any number you made, Right. divide that by consistency rate, which is 20%. 20%. So look, so your highest number is 5,800 Right. divided by 20% Right. equals 29,000. 29. So that's the return. So we are reversing. So what is 20% of 29,000? So if you multiply this by 29,000 times 0.20 is 5,800. So you're doing it a reverse calculation. So whatever number you made, Right. just divide that by By 20%. 20% in FTT and 30% in Legends and Apex. So that would be your finishing goal. Oh, okay. But I can make as much or. But don't exceed 5,800 though. Yeah. No, but I. That would be the- during the day I can make more than 600. Oh, no problem. Now you have to. Otherwise, you're gonna go aggressive, right? Yeah. Because one of them is almost there. I think I'm 25,000 over. Okay. So you're at 25,000? Over, yeah. Oh, yeah, that's great. So what's the highest day was 5,800? 5,800. Perfect. So that means that you have to, now you can play with multi-lots, 5 lots, 10 lots, because you have so much money available. Right. You can go and play aggressively, like 2 grand a day, 3,000 a day, right? Yeah. I mean, like I was 1,000 today, 1,000 yesterday. So it's okay. So. हाँ जी, any does. 1920 1920 ये आपने डेमो बना लिए? डेमो हमने लोड किया सीधा है ना उनको शायद नहीं, इसको इग्नोर कर दें। मैं इधर से देखता हूँ।
So आपने मेटा ट्रेडर 4 लिया है? नहीं मैंने बता दी वो तो वैसे ऑप्शन आई उसी में क्लिक करता सीधा बस। No problem. Six, 7 goes back up. 6, 9. Another swing. नहीं मैंने ओके सर, थैंक यू जी। No problem. FTA demo 2. ओके राफा जी, मिलते हैं। मिलते हैं जी, शाम को देखेंगे बाकी। आपको देखते हैं फिर क्या करना है, बाई करना है, सेल करना है। मैं तो सेल में ही रहूँगा, हाई टू गो लो। हाई सर देखो मार्केट का प्रॉफिट आ गया तो रात को इन्होंने फिर ऊपर ले जानी है, फिर सेल लगाएंगे, कल फिर उसके हैं ये 900 ना तोड़ दें इस बार। मेरे मुझे लगता है 921,000 पे ले जाएंगे, मेरी फीलिंग है। इलेक्शन है ना, मैंने कल सुबह आके बोला नहीं था, इन्होंने ऐसा बना के रखना है कि मार्केट को प्लस ही दिखाना है, तो कल वही कर गए। हम सेल में लोड वेट करते रह गए, वो सारा ले गई पैसा। तब भी प्रॉफिट में आज 670 बना दिए, ठीक है, बहुत है, ख़त्म कर दिया। शाम को देखेंगे। डन हो गया जी आपका, नो प्रॉब्लम। Single micro $25 and trailing.
ਤੁਸੀਂ ਆ ਰੂਲ ਵੀ ਹੈ ਨਾ ਜਾਂ ਛੱਤ ਤੇ ਜਾਓ ਜਾਂ ਫਲੋਰ ਤੇ ਆਓ ਤੇ ਇੱਕ ਵਜੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਕਰਨਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਵਜੇ ਨਿਕਲ ਜਾਓ ਅਸੀਂ ਵੀ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹਾਂ ਹਾਂ ਉਹ ਤੋਂ ਇੱਧਰ ਲੈ ਲਓ ਪੰਜ ਮਿੰਟ ਦਾ ਚਾਹ ਦਾ ਨੰਬਰ ਰੱਖਤਾ ਰੋੜਾ ਹੀ ਨਿਕਾਲ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸੇ ਮਿਲਦੇ ਜਲਦ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਰਦੇ ਆ ਠੀਕ ਹੈ All right, let's see which way. This is annoying. No. देखिए माइक्रो भी पैसे बना देता है ना, थोड़ा थोड़ा थोड़ा। हाँ, तो उस लो से बाई कर लें, उस लो से सेल करें। 616 बना है और 690 है। मैं उसके अंदर भी स्विंग ले लेता हूँ, ओवर बॉट ओवर सोल्ड वाले, लेकिन डायरेक्ट ओवर बॉट नहीं, ओवर बॉट, मिड बैंड, डाइवर्जन, एग्जैक्ट। बहुत भी आया एवरेज कर नहीं 9 out of 10 नो प्रॉब्लम। एंट्री राइट होनी चाहिए। तो मैं वेट नहीं करता हूँ, 635 लोएस्ट था 1 आवर का, मैं 640 से एंटर हो जाता हूँ। कभी-कभी वो जाता है। आप 1 आवर कैंडल देख रहे हैं या रेंज देख रहे हैं? नहीं, आप रेंज देख रहे हैं 1 आवर कैंडल। ओके, तो 635 है, तो मैं 640 से अभी फिर आया है ना। और ये मैं वो FPMO के लिए पढ़ रहा हूँ। आई डोंट नो लाइक द मेटा ट्रेडर, तो वो जो स्ट्रीट ट्रेडर करके है प्लेटफॉर्म, वो मेरे को अच्छा लग रहा है। इसमें मल्टीपल स्टॉप लॉस भी कर सकते हो। Okay, okay. I really liked in Nitro. Nitro is best. Really, I can drag. But FPMO Nitro is so good. Nitro is very good. So I Doesn't lag, nothing. doesn't like, and the prices are instant. Like, you know. Yeah. So मार्केट सेल करने की जरूरत नहीं, you can set Yes, just drag your. I wish it. सब कुछ दिखाता है साइड में, each ट्रांजैक्शन का दिखाता है।
स्वीट ट्रेडर ट्राई किया FTM में नहीं अभी नहीं की। Yesterday, and bunch of us were on the conference call, and we were trying to come up with a formula. How much money, which way Nasdaq can go if those 7 companies' earnings come certain way. We can predict the future based on good earnings or bad earnings. कि अगर टेस्ला गई ना $10 तो Nasdaq ने कितना ऊपर जाना है हमें पहले ही पता एवरेज निकाला, right? So then we sat down and we're like, everybody got a job, and my job was to figure out, oh man, I'm just about to do a mathematical calculation for myself. This is not for, but if anybody wants to enjoy it along the way. So right now, today is, let's look at Tesla. See, Apple in Nasdaq is 12% of the weighted average, 11% for Microsoft. Amazon is 6%. Nvidia is 7%. Google is 8%. Meta is only 3%. So that's not that much. And Tesla is 3%. If I were to, so today we are looking at Microsoft, and so that's 11, 12, 13, 14% market volatility is there. So it's a good way to figure out which way Nasdaq is gonna go. So Nasdaq, let's have a number. So let's say Nasdaq has 100. नहीं I know, लेकिन मैं आप precisely देख सकते हो कि अगर डॉलर गया ना, कहाँ से मैं शॉर्ट करूँगा या कहाँ से लॉन्ग करूँगा. अगर $10 गिर गया तो वो टेस्ला वाली मुसीबत में नहीं फंसना. So if the share is 100, yes, so Microsoft and Meta is $14 is these two companies worth. So look at this, 10, 20. So this is well over 50%, 40 to 50. So in Nasdaq, these 7-8 companies really control everything. So when they move, so that's why I'm telling everybody at 4 o'clock, just watch the charts. Because last time, 4 p.m. to 5 p.m. Like, so 4 o'clock, watch the charts. Because today, 14% of Nasdaq is going to move. Which way? I don't know if Nasdaq earning. I don't like it when two earnings are in the same day. Right. On Tesla is how much? Tesla is 3%.
Remember 3% it moved, it went up $13 in 2 days. I think 21% Tesla stock moved and NASDAQ stock. So I'm just going to do some math to see if the earnings come good, how high should be the number? Yeah. And if the earnings come at the bottom. 100. I'm just giving an average. So if the NASDAQ was rated at $100, this is $100. So NASDAQ US 100. $14 is coming from these two companies. Microsoft is 11% and 3% is Facebook. But so when Apple does something, like single-handedly, these companies have a lot of value, right? So that's why when they move, we move, right? So, and every day only these get traded mostly. Otherwise, very little, like pharmaceutical and Walmart. So let's see. I'm gonna try to come up with some calculations to see where is it. But now I have to figure out a range. But I already have a range. Like if it goes to R3, I have a range. But I'm trying to figure out a dollar value, in a sense that if your earnings per share or if Microsoft earnings are good and they go up $10 or $4 or $5, I don't know, right? Where could NASDAQ point? So it's called the combined influence. So where could this go today? Okay, let's do this. I need this first. 39, 11, 45, 30, 81, 23, 16, 12, 12, 15, 15, ਲੈਣਾ ਹੋਇਆ ਪੰਜ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਬੜਾ ਹੀ ਰੇਟ ਦੀ ਪੈਕੇਜ ਨਿਕਲ ਸਾਡਾ ਕਿੰਨੇ ਬਣੇ ਆ ਤੇ ਇੰਨੀ ਕਰ ਦਿਓ 671 ਦਾ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਕੰਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਇਹਦਾ ਹੀ 10 ਕਰਕੇ 100 ਬਣਾਉਣਾ 15 ਤੋਂ ਬਣਾਉਣਾ ਦੇ ਪਤਾ ਕੋਡੇ ਨਾ ਅਕਾਊਂਟ ਉਡਣਾ ਕਾਪੋ ਰੋਕਣਾ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰੋਕਾ ਹੀ ਸੌਂਦਾ ਤੇ ਕੋਈ ਸਿਸਟਮ ਚਲਾਵੇ ਇਹਨੂੰ ਵੇਖੋ ਵੀ 40 50 ਪੁਆਇੰਟ ਸੱਦੇ ਗਈ ਹੈ ਥੱਲੇ ਇੱਕ ਦੀ ਐਵਰੇਜ ਕਰ ਜੇ ਉਹ 100 ਹੋ ਗਿਆ ਇਹਦਾ ਉਹਦਾ 100 ਗਿਆ ਦਾ 50 ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਕੋਈ ਏਰੀਆ ਤੇ ਜਾ ਗਿਆ ਏਰੀਆ ਪਹਿਲਾਂ ਐਵਰੇਜ ਪੜੇ ਹੋ ਗਈ ਨਹੀਂ Because this is where I like it. Nothing is random. Every single thing is scientifically tied with the math. So, you could be wondering, how come, who's buying NASDAQ contract? Nobody. Very little. The stock price, so that's why 9:30 to 4 o'clock, you will see S&P and NASDAQ moving. That price is adjusted based on these stock values. So if the stock value is rising, NASDAQ is rising tick up. If it's declining, NASDAQ is declining. So that's how the price of an index is done. So futures contracts, CFD, spot. So that's why I don't like to trade so much gold or crude oil, natural gas, because there's nothing mathematically I can say. Yes, natural gas in the winter goes up, summer goes down. Gold these days has just been crazy. Crude oil, if there's a world issue, goes up or down. But NASDAQ and S&P, I can scientifically put it in an Excel and figure out if it moves certain percentage, what would be my ranges, right? So these 7 companies move the whole NASDAQ. yes. हाँ कोई नहीं करवा लीजिएगा ठीक है ओके सर
Thank you for you. Like for instance, right now for your calculation, why you're just calculating the Microsoft and Meta, Yeah. and not the other ones? No, because today is these two will move. Oh, okay. Because remember, it's fine, but it's because 14% of NASDAQ is gonna move based on these two companies. So. Because they have their Earnings tonight, earnings call tonight, that if Microsoft says, yes, we are good, we made money this quarter, Right. we're gonna give you some money as a Yeah. stock value goes up. Yeah. So we have three possible, four probability, statistics, right? So Microsoft up, so that's one combination is Microsoft up and Meta is up, Right. great. Yeah. Now, second option is Microsoft up, Meta down. That's second probability. Third one is Microsoft down, Meta down, right? And the fourth option is Microsoft down, Meta up. So there is only four combinations, right? Right. Because of, if there was a single combination, much easier. Now I have to analyze four combinations. Yeah. Because what will happen, because it's 14%, like so I will put in the formula of 3% and 11%. So it's pure math, right? Yeah, yeah. And I can say, all right, if today was just Apple, much easier. I have only Apple up or Apple down. Yeah. But now I have to figure out four options. If Apple goes up, Right. Microsoft goes up, but there's another 3% of the company, which is, so either I can subtract and I can say I can work with only 9%, 11, the difference between it. But I like to kind of visualize to see. Yeah. Yeah. Again, I'm not gonna put a trade in, it's just for my own seeing just to have how an idea. exactly the stock moves. Right. So they're gonna say, because you have to understand, not every single company, every quarter is gonna say great. Yeah. So everything goes up, unless it's like Nvidia, right, which is just keeps going quarter after quarter after quarter up, right? Yeah. And but everything else is, let's see what Microsoft has planned for the next. Every single tech company writes the word AI beside it, and the stock goes up, right? So, and stock in life does not care about the value of the company. That's just people who are trading the stock. Right. So This is the it's just I would invest into something and I would make money based on what the company performance is. But that stock, let's say if it's trading so low, was 10 years ago. Now look at the stock of, so stock market never ever represents the health of a company. It's just, it's so inflated that it's crazy. It is crazy. So, discussion. Sure, man. That's when. Yeah. All right, let's do his AnyDesk 102. So that's why I really truly enjoy NASDAQ, is to be able to, because I'm a tech type of guy. So And NASDAQ is good. It's got some movements to it. You can get excited. because of these seven companies, these seven companies are also in S&P. Right. So. Yeah. S&P तो देखें US 100 कंपनी है ना NASDAQ की, S&P की 500 है, 75 कंपनी दोनों में है, ये 7 दोनों में है। लेकिन NASDAQ है 100 कंपनियां, 100 कंपनी, S&P 500, हाँ जी, लेकिन तेज 100 वाली चल रही है क्योंकि ट्रेड वो हो रही है ना, लोग सिर्फ वही ट्रेड कर रहे हैं। ये मैग्निफिसेंट 7 नाम है इनका, ये देखें मेरी बात सुने, इन सारों के साथ ट्रिलियन लगा हुआ है, एक्सेप्ट अभी टेस्ला के साथ नहीं लगा, वो भी लग जाएगा। 900 बिलियन तो चला गया, 1 ट्रिलियन की हो गई यार। देखें अच्छा ट्रिलियन
$1 trillion की कंपनी. अब वो Apple is saying we're gonna go exceed $4 trillion. You know how much trillion is? Like it's just like इंडिया की इकोनॉमी हुई है 4 ट्रिलियन. एक कंपनी इसको ट्रेड कर रही है. Oh my God, man, it is just annoying. All right, guys, 1:15. So. So $1 of Microsoft will move, based on my math, 5 points on NASDAQ. If stock value goes up $1, 5 points should move in NASDAQ. So And if it goes six, one down, it will. So now we are gonna see how if the stock value and all of that. So we can. But you base that on what price on the No, current price, wherever the price is. Current price, wherever it stocks, because it would be the last trading price, right? Right. So let's say if it's trading at 20,500, let's pick an example. So if your $1 Microsoft goes up, Yeah. NASDAQ will move by 6 points. Right. Right, so now generally, now let's see, now I have to put in the formula because it's 3% Meta as well, right? And Microsoft, so I'm going to calculate based on 4 odds. One odd is Microsoft up, Meta up. One odd is Microsoft down, Meta down. 1/3 is Microsoft up, Meta down. 4th is Meta up, Microsoft down, right? So
Just to kind of get an idea, worst case, best case scenario, how far? And let's say if it moves up 10% of the stock, what would be that dollar value? Which, so Excel is great to, you can just type in a bunch of numbers and so current price of Microsoft. All right, guys, I will be seeing you guys tomorrow. Enjoy. Take care. I'm just gonna shut up the live stream now and do my calculations on for my personal enjoyment.